Okay, very good afternoon, everyone. Welcome back to this AICTE ATAL Academy sponsored 6-day faculty development program on the theme promoting entrepreneurship and advancing the startup ecosystem within academia, empowering educators, organized by IPS Academy Institute of Business Management and Research Indore, a NAC A++ accredited UGC Autonomous Institute. And for today's session, we are delighted to have among us our esteemed resource person, Dr. Shebil Mukherjee, sir, professor at IIT Indore, adjunct faculty at RMIT Melbourne, Australia, and also the co-founder of Quantec L2M Private Limited. So we welcome you with a huge round of applause. And may I now invite Dr. Suraj Sharma, sir, and Dr. Pallavi Mukherjee, ma'am, to formally welcome sir with a sapling. Thank you for joining us here, sir. And may I now invite you on the stage to take up the session. Hello, good afternoon, everyone. So, in continuation to our session one that we did on day one of this FDP program, that was held on 9th of December, first session, I think. In that case, we have mentioned about three specific products that our startup team are trying to actually develop in the way that it should go for large-scale commercialization. So, three aspects we mentioned, if you remember, right? So, one aspect of it was relevant to healthcare. One aspect we mentioned regarding agriculture, and another, the last one we are talking about, or we have talked about environmental sustainability. Okay. Now, we segregated that topic because that has something to do with technical, and we tried to show you how it is relevant to each and every one of us sitting in this room. Okay. And today, our session number 2, we are touching upon those products only, and we'll be sharing with you like how should be taking these products from the lab to the market, basically. Now, while actually taking these products into the market, there are several aspects. Like in the lecture 1, in which I have mentioned to all of you that for the product development and going for the masses, it is not only we need expertise from the domain of science or engineering. We need everyone, each and every one of you sitting inside this room also. We need. And today, surprisingly, we'll be seeing that we'll not be talking mainly from the core. We'll not be speaking from the domain of computer science or mechanical engineering or electrical engineering. And many of these cases in which we'll be talking about the business strategy which we have thought about, that how should we proceed this and taking this further to get some kind of financial we should say appreciations to take these products to the market. We'll be speaking of those. And while sharing those strategies, many of you might be also thinking that whatever the strategy we are referring to, it may be having 20% of error or 30% of error. It can be improved. And that is the reason we are sharing.
commercial interest there for them or not. So we'll be sharing some of those informations also, and private partners, because that is one of the motivations of our government of India since the last several years we have been seeing. Like right now, we are no longer interested to look at our nation and saying that we are a developing country. We are a developed country. And if we need to get counted in the top 5 or top 3 in terms of the developed nation, so-called, so that's why the private partner or the industry partner should come forth. And that we had been seeing being, venture or startup, we should be saying, in the domain of so-called quantum semiconductors. Okay, so we have seen some private partners have actually come up, and not only others, they have also joined hands with us. So some of those informations also will be sharing. And regarding many of our products, another critical aspect was reaching your customer. The customer can be a business customer, the customer can be who are lying at the bottom of the pyramid. So we have reached out to them. Okay, so how we are doing it, so some of those aspects also will be sharing. And there are several communities in academia. For example, we belong to electrical engineering, so we'll be presenting one society, worldwide society, we call it IEEE. So how they have also ventured out in several aspects and several, divisions of the commercializations of the innovations of the R&D and the academia to actually implicate the innovations to come out for the market and for the mass. So those aspects also will be touching upon. So altogether, that's why we are referring to the name of our company is Quantum Related Technologies. So Quantech in short, innovations we are doing, and our motivation is to get the products from lab to market. But as I told you also in my lecture 1, that I am maybe the face of it, but the backbone are actually staying behind me or staying in front of me, the students. They're the future. So that's why today's sessions will be dealt mostly by Poonam and Animesh, and then eventually our CEO, CTO, CFO are sitting also, and I'll be also here. So because it is not only that the faculty members who are in the experience level, but also the students who will be the next or the future, faculty members and future, innovators. They should also really come forward and present the cases in front of you. This will be a learning process also for them. So I'll be now handing over the mic to them and ask them to please start. So good afternoon one and all present here. Myself Poonam Bajoria, along with my team members, we are happy to deliver our talk on the title Entrepreneurship through Research, Innovations and Best Practices. Here we'll mainly focus on how we have started our journey moving forward to taking our technology and innovation from the lab to the market scale. Here our main focus will be, we will discuss about how we have first initially thought about developing or establishing a startup, that is Quantech L2M Innovations Private Limited. The root of this startup lies at our research group, that is Hybrid Nano Device Research Group, HNRG Lab at IIT Indore. The first motivation of establishing a startup was, we can say, we were like the expert in material domain and the sensing domain. Like we had developed various materials for sensing applications, and then we had developed a quantum material, as sir has discussed in his first lecture about the nanoparticles. Nanoparticles are in the nanometer range, and we have developed a quantum material which has its thickness in the nanometer range, but the dimensions of that material are in few micrometers. So those materials help, they can sense, they have a better sensing performance as compared to other state-of-the-art literature materials. So we achieved a tremendous, we can say we achieved a tremendous success in the material domain, and it had shown exceptionally sensing behavior. And we were fortunate enough to get chance from the Tata Materials competition, and that competition actually
we can say that sparked an inspiration among us to establish a startup. We had during the competition itself, we had started working upon how we could develop that our sensor or our material specific sensor, which is our expertise, into a market level or industry level product. And we had learned many things from that from that competition. What we got to know was how our product, like how our sensor could be evolved into an industry level product. So with the help of their initiatives and different protocols, industry level protocols, we got to learn that what is the requirement to establish a startup. So from that, we had then established our company, that is Quantec L2M Innovations Private Limited. And here mainly what we do is we focus on how we can nurture our fundamental scientific research into tangible innovations and product level, so that it can reach the normal public and it can address the real life world challenges. So moving forward, I would like to give a short introduction about our team members, our mentor, director and co-founder Professor Saibal Mukherjee and Dr. Pallavi Mukherjee. Professor Saibal Mukherjee has an expertise in the technical domain of material science, nano devices, semiconductor technology. So his expertise have provided us the fuel to just expand in the domains of material as well as device technology. While Dr. Pallavi Mukherjee, she had, we can say she had given our dreams a vision. We could know about the economic and the financial condition, financial related things of developing a startup or of establishing our team. Next, moving forward, these are our ex-co-founders. These three members, Dr. Chandrabhan Patel, Dr. Mayank Dubey and Dr. Sumit Chaudhary, they have worked on their research domains and have made that their research domain into tangible products. Like they were, I can say, their hard work and their motivation from our mentors have they have inspired us to carry forward the prototypes they have developed, and we are currently working on it to make it more, we can say, more accessible to the public. Moving forward, I'd like to also introduce our other team members, Mr. Vikash Kumar Verma, CEO of Quantec L2M Private Innovations Limited, Mr. Brahmadatt Mahapatra, CFO, and Mr. Saurav Yadav, the Chief Technical Officer. So this will be my presentation outlines. I'll first give you a short description about our products. Then we'll move forward to the field visit and challenges, business models that we have developed and our target markets. Moving forward with the outreach activities and the different startup schemes, followed by the different funding opportunities by IEEE as well as other government and private organizations. Then the recognitions we have earned along with the exhibitions and news highlights and the research grants we have got. So our main focus was to transform our research from lab to market, or we tried to focus how can we give, we can take our research from academia, not only limited to the academia, but we can also take it to the industry level. That was our main aim, and we are currently working on it to make it better each day. This was our first product. From the material I was speaking about, the quantum material. We can see in the image this quantum material and the dimensions that we have achieved is we can say exceptional as comparison to the literature available, or we can say there are no companies working specifically on the quantum material. If we talk about technology, our expertise in this material is the one that makes us unique.
Then we have developed the first, I was referring to the Tata Materials competition. In that competition we have developed the first prototype, and then we had worked upon it, and now the product looks like something in the figure shown. What is the main problem at the industry level? What happens is, when we are, like we can see in different industries, toxic gases are emitted directly into the atmosphere, and these toxic gases cause harm to human as well as other living organisms, and the level of detection plays a very important role while detecting these toxic gases. Like the parts per million or parts per billion level of toxicity also harms the organisms. So in our gas sensor we have an IoT integrated circuit which can provide us real-time updates to our devices. Suppose we are thinking about deploying our devices to such industries where suppose there is a industry or some, we can say, our lab where toxic gases are emitted. So if something happens in the night time or whenever you are not present in the lab or industry, so the gas sensor will have a provision, like it will be connected to our mobile application, so it can give us alerts that there is toxicity, and then you can go and take measures to just to stop, like we had that Bhopal gas tragedy incident. If we had precautions from before, then the incident would not have affected so much people. So our main aim is to deploy these gas sensors to such locations so that we can take precautionary steps beforehand. And our developed gas sensors has features like it can detect multiple gases, toxic gases at the same time, including nitrogen dioxide, sulfur dioxide, carbon monoxide, and ammonia, and many more other toxic gases. It provides us the concentration range of the gases. We also have a feature of data logging in the application where we can see the past exposure history, like daily history also we can check, monthly history as well as yearly history for different gases. And the one thing that makes our device or our app unique is we provide it in different languages. Like for us, it is easy to get anything in English or Hindi we can understand. But if we are thinking about deploying this in the rural areas, so we also have to look upon their local language so that they could understand. The next, this was industry level, but see, toxic gases would be emitted in the industries, in the laboratories, or in some power plants, those things. But if we look from the common people point of view, how will this sensor, this will not actually help a lot of common people. So we tried to look for, as we had expertise in material and sensing domain, so we tried to look for solutions that can actually address the common people's problem. Then the most important problem comes in the agricultural sector. Okay, yes sir. Yes, just to add one more thing to what Poonam has been stressing on, the gas sensors. So can anyone recollect, like what is the gas sensor related problem that we might have encountered? You forget about industry, that we or maybe our previous generations might have interacted several decades ago. A cylinder getting burst. So what was the solution given? Because the gas cylinder, the gases that is used, it is supposed to be odorless, right? So we added some additional odor to make your sensor get activated. And what if you are having or suffering from a problem of cold? This sensor will work? It will not. So there we have, maybe not now, several tens of years ago, cylinder burst, people getting injured, or building is collapsed. Those kind of incidents was a common thing in our home. But that problem was alleviated. Now we are talking about major problems. In the state of Madhya Pradesh, 1980s, the incident has happened, Bhopal gas tragedy. That is detrimental. Few years down the line, just few years before, back also, Visakhapatnam, another huge tragedy, again in some industry.
In that cases, ammonia gas leaked. So there, we are trying to make a system that should not only deal away with one particular gas, but many different poisonous gases. The poisonous gases in many cases in which there are no real-time sensors available. You do not need to wait for one person to tell us that, okay, I am just having some smell out of it, so maybe the gas is leaked out. Because at the end point, if you think about yourself as a customer, besides saving others' life, it is always to save my own life. So that's why we look for indigenous of such sensor in a remote location to your mobile, so that even if you are sitting in a safe home environment, you should get the alerts that probably in your factory this is the issue going on. And you could see the features, alert system is there, the mobile app will be giving you alarm like system. If you don't attend the problem, then it is also connected to GSM. That means an automated call will be coming to you. If you don't pick up, then it will go and trigger another phone in which whoever will be buying this product, they will be having a feature to add 2 or 3 mobile numbers. So for example, a company has more than 1 directors, and if it is relevant to some industry that is excreting some kind of gases, so those connectivities are also there. And multiple gas sensors, not only carbon oxide or carbon monoxide and nitrogen oxide, there are many. So those are the aspects one can imagine if you have it. Now, these things that you are showing, the bar diagram, these are the history, so that you study the sections of your industry, that which instrument probably is giving you trouble, or probably you set the threshold, you look at the history, that probably in the month of September this is the status. So if I do not resolve few things, if I do not change some spare parts, probably in the month of December I am going to get a problem. So even if you don't have a problem, look at the history, look at the gas excretion, then you take measurable actions to stop mass related problem in future. Okay, so that is the aspect of it, why IoT, AI and quantum world can come together to solve our own purpose. Okay, so that is the aspect. So any of you can also ask, there are multiple sensors available in the market, so why we are developing this? So I have a slide, like this is the MQ7 commercial carbon monoxide sensor. They are claiming that it can detect carbon monoxide, but there at our lab we had, like, the images shows the configuration of the sensor pins. This is the real image of a sensor. When we had checked the main important parameter in sensing is the Rg/Ra ratio in case of gas sensing application, which actually determines how efficient is our sensor as compared to other sensors. If I am taking, suppose for example, carbon monoxide, ammonia, nitrogen oxide and hydrogen sulfide, sulfur dioxide, nitric oxide, carbon dioxide. These were the gases I have took for the experiment. So what we observed was the sensor, which is a carbon monoxide sensor, but as you can see from the response curve, that is Rg/Ra ratio is higher in case of NO2 and NO as compared to CO. So they claim that it is a carbon monoxide sensor, but we can see the selectivity, like if we have a variety of gases, toxic gases in the environment, so it will give an alert that there is a toxic gas. So whether the alert that it is carbon monoxide or nitric oxide or nitrogen dioxide, is it providing us the correct result? That is also an important aspect we are looking into. Like we have to develop sensors, but we are developing multiple sensors. Then we are looking that our sensor has to be specific or more selective towards the other interfering gases present in the atmosphere. Now we are like comes water bodies.
Water bodies contamination is we can say is a big environmental issue nowadays, because this mining or industrial activities or the vehicle pollutions, all the domestic waste, these are directly dumped into the water bodies. But these water bodies actually contain the heavy metal ions. These heavy metal ions, if you look on the harmful effects of the metal ions, it not only degrades the water table or the crop productivity, but if we are continuously exposed to this heavy metal ions, then our body, like carcinogenicity and genotoxicity, all these problems, like human body will not directly, suppose you are exposed to the heavy metal ions, you will not get a direct or I can say short term effect on your body, but there is a long term effect on human bodies. So we need to detect this toxic metal ions from the water bodies. From that we had also, as I had told, that we have material expertise, so we had developed a different quantum material which could detect the heavy metal ions like lead, mercury, cadmium present in the water bodies at very trace levels of ppb and ppm level. We can see in the table mentioned lead, chromium, cadmiums. These are as per the WHO guidelines, the limited value of exposure like 0.01 is for lead, because if the level of toxic metal ions is greater than these levels, you can see it can damage the brain, kidney and circulatory system as well as nervous system. All the four major systems responsible for the proper functioning of a human body. All those systems are affected indirectly or directly. So we need to detect, if we can detect this heavy metal ions at very low concentration and we could take safety measures, then it will be helpful. Like if we see in the agricultural perspective also, the farmers are always worried about their crop yield and productivity. But what about these heavy metal ions? These heavy metal ions come through the water bodies, through the irrigation to the plant, and then these metal ions, not only it affects the human health, it also affects plant life. And if we look to the biomass, those food chain and food cycle, the toxicity level increases with each topic level as we go deep into the food chain. So we need to detect this at trace level, and then we had developed, this was our motivation for developing a heavy metal ion detector. We had developed our strips that could detect the heavy metal ion, and the complete technology was IoT integrated that could store results on the cloud, so that it could give the similar alert based system. It would work on the similar alert based system as in case of our toxic gas detector. Moving forward, the main problem in India, healthcare unawareness. Like people in the rural areas or remote region, they are literally unaware of the diseases. As sir had mentioned in his first lecture, the third important most disease or third important problem in the healthcare sector. We are very much aware about blood pressure and diabetes. Just because if we look 20 years back, there was not such more awareness about diabetes, but now every other home in this country has a diabetes reading that glucose monitoring system. But the kidney disease, that is chronic kidney disease, this is a very, we can say the problem with this chronic kidney disease is that you will not be able to know that you are affected by this disease at a very early stage. Like when people come to know that they are affected with CKD is the stage when you need a kidney transplantation or a dialysis. So we need to develop, we thought of developing such a product that could actually give you information about your uric acid and creatinine levels in your blood that could help you know that whether you are approaching that CKD stage or not. Like CKD has various 5 stages. In stage 1, there will be your urination or your excretory system won't work well. Then slowly your blood or your nephrons will start accumulating the toxicity, and when we arrive in the 4th or 5th stage, that time 90% of our kidneys are damaged. And in India,
people are literally unaware of it. What happens is, suppose you have a stomach ache, you take a medicine and you sleep. But when that stomach ache is like, it persists for a longer time, you go and visit a doctor and then you come to know that you have an ulcer or something like that. So it's the same problem here, because if we look at the common people, they don't, until and unless a problem is there at your doorstep, you don't think about its solution. So what about we provide a solution that could help us predict that whether we are well or we are like in the verge of getting CKD. So that was our this product will help us to monitor the kidney, uric acid and creatinine levels in our blood, urine and saliva, all the biological fluids. The range which the sensor will detect and tell you that you have a, suppose for example your uric acid level is 35 micromolar in your blood serum. Then the system will also give you alerts, or it will give you information that whether you are your uric acid level is up to the normal level, or it is a deficiency or an hyper secretion of uric acid level in the blood. So that will help the people to know about it. There are in the market, there are no sensors available that could accurately give uric acid and creatinine levels at the same time. They are claiming it, you can test, we have already tested it, the results that they are giving is, we can say, unanimous, like it will not repeat. If you are taking the same person and you are taking 3 different measurements, those measurements also will not align, means they will not be same. Not once, twice, we did it repeated number of times. So our main aim is to sell a product. It's not that we are developing a product, as people are developing, we are also focusing on that. We are mainly trying to make a solution to the problems that the commercially available uric acid meters or creatinine meters are not providing. They are claiming that it is 10% accurate or 20% accurate, but the accuracy level is not such. So, yes sir. Now, for 2 different slides that you have seen, the first example was relevant to our environmental sustainability, the gas sensors she has mentioned about, and the second one is the tool to probably get to know how you have positioned yourself in terms of CKD, okay, chronic kidney diseases. Now these 2 products in terms of now marketability have 2 different aspects. For gas sensor, market is already there. Many different municipal corporations, many different environmental commissions, they are using sensors. Now we are telling them to use ours as compared to something that is already existing commercially, because it has several different aspects. Now for this there is no market. Glucometer has a market. CKD meter does not have any market. So for this, the business strategy goes to another level. First, you have to, if you remember my lecture 1, there I was talking about getting our agricultural sensor and get it to farmers and tell them that whether they are going to use it or not, educating them who do not have some kind of academic degree on paper. But in many cases, farmers know many things better than any of us staying in these cases. So in terms of knowledge, I am not going. Knowledge, they are probably better than many of us. But in terms of so-called academic degrees, they are less. So we are telling them that you need to use it. For this also, we are telling educated people having so many degrees to tell them this is for your own good. Both has problems and challenges, but different aspect-wise. For agricultural sensor, there is a market, but it is able to, like the challenge will be able to probably comprehend or get them understand about something. For this, market is not there, as well as you have to teach the educated people that it is for your own good, own safety. What do you think many of us, I think all of us, staying inside this room, we use smartphone, right? From different companies. So let me hear, which kind of company smartphone all of you are using? Tell me the names, please. Motorola, Samsung,
what is phone for and why is this called a smartphone? What is smart about it? Multiple apps, internet is there, watching a movie, picture quality. What is the purpose of a phone? Watching a movie? Purpose of the phone is watching a movie when it was invented for the first time ever. But now, calling somebody goes secondary. Your ambition goes secondary. But the very purpose the phone was invented. Now it is like a mini TV to you, entertainment store. Now you're going for a car. The purpose is to go from, let us say, Indore to Bhopal, that's it. But now you need luxuries. What if I have, fantastic television 3D show and what not? It will be very, very good. Some robots should be sitting there, giving us some, head massage or something like this. So now from actually the very purpose of car, we are going to something else. So basically, we are always taking our home. We always want to take our home along with us. That please travel along with us. So this is also the very purpose of it, kidney, because basically our lifestyles is changed. And because of the lifestyle, it affects yourself only. Each and every person in the entire world will look for more and more financial benefits. Be it any person. More financial benefits will be working against you. Okay? Because you'll be paying more to, again, doctors and hospitals. But then you don't have time. If you are earning crores, you don't have time to go to hospital. So that's why this kind of devices, like hardly people go to hospitals and get their annual health checkup done regularly. If you are beyond some age, it is actually, advised by many practitioners in the medical world that you please get your blood or urine sample tested for cholesterol, for uric acid, for glucose, at least 1 time or 2 times in a year. You should do it. But we hardly have any time. We have n number of excuses. Okay, that is okay. But all has to do something with your workout or probably your lifestyle that you have maintained, you are maintaining. So that's why we are providing a tools. Maybe down the time, our laziness and our lifestyle will go in such a way that we want to imagine something, that I want to watch a movie Sholay. So I should do like, and Sholay should start. Who knows? So same thing, probably 50 years from now, I want to get my uric acid done. So that is our added challenge, how we are going to do it. गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम है विकास कुमार वर्मा और मैं अपनी स्टार्टअप कंपनी के जो है अगले प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा और ये हमारे स्टार्टअप का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है और बेसिकली मैं इस प्रोडक्ट के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि पिछले 2-3 दिनों से बहुत सारे लोगों ने आके बताया है कि हम लोग एकेडमिया से कैसे स्टार्टअप की तरफ बढ़े, कैसे इंडस्ट्री के बीच में जो गैप है उस गैप को कैसे फिल करें। तो एक केस स्टडी टाइप का मैं इस एक प्रोडक्ट को शुरुआत से लेके चलूँगा कि कैसे ये आइडिया हम लोगों को कहाँ से आया और वहाँ से कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए हम लोग उस प्रोडक्ट की तरफ पहुँचे कि वो प्रोडक्ट अब कॉमर्शियलाइजेशन के लिए एकदम से रेडी है ना। तो मैं सबसे पहले शुरुआत से बताना चाहूँगा, हम लोग एक ट्रिप पर जा रहे थे धार के पास में, मैम को याद होगा। तो सितंबर का महीना था, तो वही सोयाबीन की फसल की कटाई वगैरह चल रही थी। तो हम लोग एक चाय के दुकान पर रुके कि हम लोग थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे। तो वहाँ पे कुछ किसान लोग बैठ के बात कर रहे थे कि साल दर साल सेम टाइप की सीड्स यूज करने के बावजूद, इनफैक्ट जो फर्टिलाइजर्स है उसका अमाउंट बढ़ाने के बावजूद उनकी जो क्रॉप का यील्ड है वो लगातार घटता जा रहा है, उनकी जो पैदावार है वो लगातार घटती जा रही है और जो फर्टिलाइजर्स का प्राइस है और फर्टिलाइजर का अमाउंट है वो दोनों बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह से उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता जा रहा है फाइनेंशियल।
तो हमारा स्टार्टअप वो स्टार्ट हो चुका था 2022 में, तो ये 2023 की बात है, लगभग सितंबर की। मैम को तो याद ही है, मैम का ये आइडिया था। तो मैम ने बोला कि हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जिससे फसलों की पैदावार बढ़ जाए। तो ये तो थोड़ा अजीब सा ख्याल था कि किसी टेक्नोलॉजी से किसी फसल की पैदावार कैसे बढ़ाई जा सकती है। पर मैम का फोकस था नहीं, अगर हम लोगों ने स्टार्टअप किया है और तुम लोग ही लोग बोलते हो कि हमको इसको लैब से मार्केट तक लेकर जाना है, तो हम लैब से हम फार्मर्स तक सीधे क्यों नहीं जा सकते। क्योंकि इंडिया, हम लोग ऐसे भारत देश में रहते हैं जहाँ की 70% से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो खेती किसानी के ऊपर निर्भर है, हमारी खुद की फैमिली भी। तो हम कुछ ऐसा क्यों ना करें कि फसलों की पैदावार बढ़े। तो हम लोग ट्रिप से वापस आए, वापस आने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, लिटरेचर स्टडी किया, फिर देखा कि और किसानों से भी हम लोग गए, बात किए उनके पास। और उसके अलावा जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है इंदौर, हम लोग यहाँ पे भी गए, और जो सॉइल साइंटिस्ट हैं उन लोगों से हम लोग मिले। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसी वजह क्या है जिसकी वजह से फसलों की जो पैदावार है वो लगातार घट रही है। तो हमको लिटरेचर से भी यही मिला, और जो सॉइल साइंटिस्ट वगैरह लोग थे इनसे भी हमने बात की, तो यही पता चला कि जो सॉइल की क्वालिटी है लगातार फर्टिलाइजर के एक्सेसिव यूज की वजह से लगातार डिग्रेड होती जा रही है ना। तो इसकी वजह से जो फसलों की पैदावार है वो घट रही है। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपकी फसल जो है वो अच्छी दिख भी रही है, तो बहुत सारे नए नए टाइप के डिजीज आ गए हैं, और उनके जैसे कोविड की वैक्सीनेशन ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया, और पूरे तरीके से वो काम कर जाए ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो उन लोगों ने बताया कि बहुत सारी नई नई डिजीज भी आ रही है जिनकी वजह से भी उन फसलों की जो क्वालिटी है वो भी डिग्रेड हो रही है, इसकी वजह से भी उनकी यील्ड घट रही है। तो हमारे पास दो पैरामीटर्स थे, एक की सॉइल की क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाए, और दूसरा जो उनकी फसलों के ऊपर रोग लग रहे हैं उन रोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए टाइमली, ताकि उनके जो फसलों के ऊपर नुकसान होता है वो ना हो। तो सबसे पहले पैरामीटर के ऊपर हम लोगों ने काम शुरू किया फर्स्ट ईयर में। तो हम लोगों को ये था कि सॉइल की क्वालिटी को कैसे मेंटेन रखा जाए। तो जब हमने थोड़ा और डिटेल में स्टडी किया तो हमको ये पता चला, हम लोग तो बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, कभी एग्रीकल्चर में गए नहीं थे। तो फिर जब लिटरेचर किए तो पता चला कि जैसे हम लोगों को दाल चावल बनाना हो, सब्जी बनानी हो, तो उसके लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं। जैसे तेल का एक सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए, नमक सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए, गरम मसाले सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए। अगर ये नहीं हो तो भी हमारे खाने नहीं आएगा, लेकिन अगर ये हो और सही अमाउंट में ना हो तो भी इनका टेस्ट नहीं आएगा। तो सबसे जरूरी चीज है कि इनका जो कंपोजिशन है वो जब एकदम परफेक्ट अमाउंट में होता है तब वो जो टेस्ट का ब्लेंड आता है वो मजेदार होता है। सेम ऐसे ही हमारे क्रॉप्स के लिए भी है। जैसे सोयाबीन है, क्रॉप्स के न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, पीएच, सॉइल मॉइस्चर, यही सब सारी चीजें। तो अब इनका अगर बैलेंस अमाउंट, जैसे सोयाबीन है इसके लिए अलग होता है, उनका जो कंपोजिशन होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का। राइस होता है उसके लिए उनका कंपोजिशन अलग अलग होता है। अब हम लोग क्या गलती करते थे ट्रेडिशनली, अभी तक हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बाबा दादा की जमाने से ये चलन चला आ रहा है कि पहले हम लोग सोयाबीन उगाएंगे, सोयाबीन जब निकाल लेंगे उसके बाद हम लोग उसमें पोटैटो लगाएंगे, पोटैटो के बाद फिर मटर लगाएंगे, ऐसे ऐसे करके हम लोग बढ़ते जाएंगे। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि जो हमारी सॉइल है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का कंपोजिशन है वो एक्चुअली में किस क्रॉप को सूट कर रहा है। और सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग सोयाबीन ही लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे खेत में सोयाबीन ही हो, तो हमारी जो सॉइल है क्या वो सोयाबीन के लिए सही है कि नहीं है, ये हम जांचने की कोशिश नहीं करते। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मतलब बहुत सारे एजुकेटेड लोग आ गए हैं खेती किसानी के फील्ड में भी, वो लोग क्या करते हैं लैब से टेस्टिंग करवा लेते हैं। लेकिन लैब टेस्ट में दिक्कत ये है कि लैब टेस्ट के लिए या तो दो जगह हैं, एक तो गवर्नमेंट के जो ब्लॉक्स वगैरह हैं वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग होती है, दूसरा ऑप्शन है कि प्राइवेट लैब्स में आप लेकर जाओ। प्राइवेट लैब्स में जैसे अपने इंदौर की हम लोग पहले स्टार्ट में वहीं से करवाते थे, इंडेक्स लैब है। एक सॉइल सैंपल का अप्रॉक्सीमेटली 1600, कितना 1600 रुपये चार्ज करते हैं एक सॉइल सैंपल का। और वो एक सॉइल सैंपल आपके पूरे खेत का इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। आप जैसे दो पैर रखें ना, इस पैर के नीचे का जो कंपोजिशन है वो अलग है, इस पैर के नीचे का अलग है, और वो बोलते हैं कि आप खेत के 5 कोनों से 4 कोने और एक सेंटर से आप लेकर मिक्स करके आओ, हम पूरे खेत का रिजल्ट बता देंगे। तो वो रिलायबल टेक्निक नहीं है। तो हम लोगों ने सबसे पहले यही सोचा कि अगर कंपोजिशन सही मिल जाए तो हम क्रॉप की यील्ड को बढ़ा सकते हैं।
उसी से एसोसिएटेड एक और फायदा था कि अगर हमको सही में कंपोजिशन पता चल जाए कि जैसे नाइट्रोजन इतना, फास्फोरस इतना, पोटेशियम इतना चाहिए सोयाबीन के लिए सपोज करो, है ना, तो अब हमने जब टेस्टिंग की तो हमको पता चला कि नहीं इसमें नाइट्रोजन कम है, तो हमने क्या किया, उसमें यूरिया या फिर नाइट्रोजन से रिलेटेड कोई भी फर्टिलाइजर सफिशिएंट अमाउंट में डाल दिया। तो उससे क्या होगा कि जो हम लोग एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, जैसे हमको पता है कि 1 बीघे में 3 बोरी यूरिया डालना है, ऐसे बोल दिया जाता है ना, गांव में ऐसे चलता है कि 1 बीघा खेत है तो उसमें 3 बोरी यूरिया ले जाके छीट दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। हम ये नहीं जानते कि हमारे खेत को सही में 1 बोरी की जरूरत थी या 3 नहीं, हमको 5 बोरी की जरूरत थी, हमको तो पता ही नहीं था, तो हम तो वैसे डाल देते हैं। अब दोनों ही केसेस में सपोज कीजिए आपके खेत को 1 बोरी की जरूरत थी, लेकिन आपने ट्रेडिशनली जो चलन में था आपने 3 बोरी ले जाके डाल दिया, तो अब आपने सब्जी में अगर नमक ज्यादा डाल दोगे तो क्या टेस्ट देगा? नहीं देगा। तो हमको यूरिया की जरूरत थी 1 बोरी, हमने डाल दी उसमें 3 बोरी, तो वो हमारा जो 3 बोरी का पैसा गया वो तो गया ही गया, ऊपर से हमारी क्रॉप को और ज्यादा नुकसान कर गया। मतलब दोहरी मार पड़ी किसानों को, है ना, पैसा भी गया और फसल का भी नुकसान हुआ। और यही मान लीजिए कि अगर हमको 5 बोरी की जरूरत थी, आपने 3 बोरी डाली। ऐसे भी केसेस में क्या है कि हमको जितनी जरूरत थी उतना तो हमको मिला ही नहीं, आपको भूख है 5 रोटी की और 1 रोटी खिला के आपको भेज दिया जाए, तो मन संतुष्ट होगा? नहीं होगा, ना हम खुश रह पाएंगे, ऐसी ना हमारी फसल की पैदावार बढ़ पाएगी। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका था जो हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग कर सकते थे अपने स्तर पे, कि एक कोई ऐसी मशीन बनाएं जो मिट्टी के अंदर कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना पोटेशियम है, इसको सही मात्रा में बता सके। तो ये हमारे सामने गोल था। तो हम लोगों ने, मतलब सर ने भी काफ़ी गाइड किया कि नहीं आप लोग पहले यहाँ से जाके बात करो, वहाँ से करो। तो काफ़ी कुछ हम लोगों ने पढ़ा, उसके बारे में देखे, बहुत सारे सेंसर्स वगैरह भी ऑर्डर किए। चाइनीज सेंसर्स बहुत सारे हैं, JXCT वगैरह कंपनी के, जो क्लेम करते हैं कि वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब चीज़ें वो बता देंगे। तो हमने उनको मंगाया, सर ने बोला कि जब एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है तो उसको मंगा के एक बार टेस्ट कर लो। तो हम लोगों ने मंगाया, पर मंगाने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि आप एक ही मिट्टी के 3 अलग अलग बीकर्स में रख दो और सेम सेंसर से सेम टाइम पर आप टेस्ट करो, 5 सेकंड के अंतर पर इधर से डालो, इसमें टेस्ट कर लिया, इधर डालो, इसमें टेस्ट कर लिया। सेम मिट्टी है, सेम सैंपल है, लेकिन तीनों के रिजल्ट में ड्रास्टिक डिफरेंस, हैवी डिफरेंस। तो हम माने किसको, ये सही है या ये सही है या ये सही है? तो अब हम लोगों को ये लगा कि नहीं, अब इससे तो काम नहीं चलने वाला है ना। जो अब देख रहे हैं, हमारा आइडिया शुरू हुआ था एक चाय की टपरी पर, कैसे कि एक नॉर्मल किसान की, जो 2 किसान आपस में बात कर रहे थे, उनसे शुरू हुआ। अभी हम लोग पहुंचे हैं टेक्नोलॉजी तक कि कैसे हम लोग उस टेक्नोलॉजी को बनाएं। मतलब हम लोगों ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो सर ने बोला कि नहीं, इन सेंसर से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को अपने खुद के सेंसर्स बनाने पड़ेंगे जो एक्यूरेट अमाउंट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, pH, ये सारी चीज़ें हमको बता सके। तो हम लोगों ने फिर वो सेंसर्स डेवलप किए। अब सेंसर्स डेवलप करने के बाद प्रॉब्लम ये थी कि उन सेंसर्स को मेजर करने के लिए हैवी इक्विपमेंट, जैसे हम लोगों को सोर्स मीटर वगैरह चाहिए होते थे। अब सोर्स मीटर आते हैं 8 लाख के। अब आप जो है सेंसर तो आपने बना लिया, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, लेकिन आप सोर्स मीटर के साथ उसको कनेक्ट करके 8 लाख की मशीन के साथ आप किसानों को कैसे बेचोगे, या किसानों की वो कैसे काम आएगा? तो हम लोगों ने फिर उसका एक रीड आउट डिजाइन किया, जैसे ये लेआउट डिजाइन है, फिर उसकी इंटरनल सर्किटरी है। तो हम लोगों ने पूरा उसका रीड आउट मैकेनिज्म डेवलप किया कि कैसे कैसे वो सेंसर की रीडिंग्स को हम लोग जो है डिस्प्ले पे ला सके। हमने डिस्प्ले पे ले आया, ओलेड स्क्रीन पे दिखने लगा, लेकिन ओलेड स्क्रीन पे दिखने के अलावा हमको ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम किसानों को कैसे समझाएं। हम लोग कॉन्टिन्यूस लगातार जो है, अभी आगे आप लोगों को स्लाइड्स में दिखाई जाएगी कि हम लोग किसानों के पास गए, उनसे बात किए, कैसे क्या कुछ अपडेट्स हमारे में आए वो बताएंगे। लेकिन फिर हम लोग जब डिस्प्ले कर लिए गए, डिस्प्ले करने के बाद आप किसानों को कैसे बताओगे कि एक्चुअली में इसको आपकी फसल को क्या चाहिए, क्या ज़्यादा है, क्या कम है। मेजर तो कर लिए, टेस्ट भी कर लिए, सब कुछ सही है, अभी तक एकदम परफेक्ट है, लेकिन वो किसानों को समझ में नहीं आ रहा, वो किसानों के किसी काम का नहीं है। तो आपके ना प्रोडक्ट को कोई खरीदेगा, ना उससे कोई पूछेगा, ना कोई मतलब है। और जो हमारा गोल था कि हम किसानों की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, वो भी हमारा सॉल्व नहीं हुआ। फिर हम लोग मूव ऑन किए इस प्रोडक्ट से कि हम लोग जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं जहाँ पे इसकी रीडिंग्स, जो हमारे प्रोडक्ट की रीडिंग है, सारी रीडिंग हमको मोबाइल एप्लीकेशन पे दिखे। और दिखने के अलावा हम लोग वो मशीन ये भी बता सके कि
किस फसल के लिए आप जो है ये टेस्ट कर रहे हो, और अगर मान लीजिए उस फसल के लिए टेस्ट करो तो उसमें कौन से पैरामीटर कम हैं। उसके अलावा आप देसी एज वेल एज कॉमर्शियल क्या क्या सॉल्यूशंस है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो फिर हम लोगों ने जब एप्लीकेशन अपना बनाया, तो ये आप ये राइट साइड में देख सकते हैं, मेरे फ़ोन में भी है, अब बाद में दिखा। तो ये आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारे मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन का है। तो आपको पहले यहाँ पे क्रॉप साइकिल चूज करनी पड़ती है कि आप रबी की क्रॉप यूज कर रहे हैं या फिर खरीफ की। उसके बाद आता है आप अपनी क्रॉप चूज कीजिए। जैसे मैंने बताया कि राइस के लिए अलग होता है, सोयाबीन के लिए अलग होता है, पोटैटो के लिए अलग होता है। जब आप टेस्ट करोगे तो हम लोगों ने अपना डेटाबेस बनाया हुआ है डिफरेंट एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट से जा जाके। तो अब जब आप टेस्ट किए, टेस्ट करने के बाद आपको सातों पैरामीटर पता चल गए, तो वो क्या करता है एप्लीकेशन हमारे डेटाबेस से मैच करवाता है कि ये जो 7 पैरामीटर आए हैं इनका जो कंपोजिशन है वो किस क्रॉप से ज़्यादा मैच करता है, मैचिंग परसेंट। तो हम लोग मशीन लर्निंग का यूज़ करके जो आपकी मिट्टी का डेटा है उसको हमारे डेटाबेस के साथ मैच करवाते हैं, और फिर ये देखते हैं कि वो नाइट्रोजन मतलब सोयाबीन के साथ मैच कर रहा है या पोटैटो के साथ मैच कर रहा है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा मैचिंग परसेंट आता है वो हम लोग किसानों को सजेस्ट कर देते हैं कि योर सॉइल इज सुटेबल फॉर पोटैटो क्रॉप। हमने उनको बता दिया, यहाँ तक तो सब कुछ सही चला। अब एक कंडीशन और आई, हम किसानों के पास गए ये अपना एप्लीकेशन लेकर, हमने उनको बताया कि ये देखो हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ये लो अब आप काम हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि सर ये बताओ हमको तो सोयाबीन उगाना है और आप सजेस्ट करो पोटैटो, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो फिर हम लोगों ने फिर सोचा कि नहीं इसमें कुछ और करना चाहिए। तो हम लोगों ने एक डिफरेंट सजेशन मेथडोलॉजी डाली। डेटाबेस अभी हमारा वही है, सेंसर वही है, प्रोडक्ट वही है, बस उसमें हमने एक मशीन लर्निंग और लगाई कि जब आप कोई क्रॉप चूज करोगे कि नहीं हमको पोटैटो के लिए चाहिए, तो वो आपके सॉइल को टेस्ट करेगा और फिर पोटैटो वाले डेटाबेस से मैच करवाएगा कि इसमें अभी क्या क्या कमी है। वो किसानों को फिर सजेशन देगा कि आप अपनी जो सॉइल है उसमें पर हेक्टेयर के हिसाब से आप इतना यूरिया या इतना नाइट्रोजन या इतना डीएपी जो भी डालना है आप इतना डालिए, और 1 हफ्ते के अंदर जो आपकी सॉइल है वो पोटैटो के लिए सूटेबल हो जाएगी। ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अब इसके बाद में जो तीसरी समस्या आई, हम किसानों के पास फिर से लेकर गए प्रोडक्ट की, ये देखो सर आपका एकदम पूरा प्रोडक्ट रेडी है, अब आप अगर इसको पोटैटो चाहते हो पोटैटो का बताएगा, सोयाबीन का चाहते हो सोयाबीन का बताएगा, गेहूं का चाहते हो गेहूं का बताएगा। तो उसने बोला लेकिन ये तो हमारी समझ में आ ही नहीं रहा क्योंकि ये तो लिखा इंग्लिश में, और हम हैं देसी, या मान लो हमारे घर में कोई पढ़ने वाला बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी पढ़ के, या हमारे चाय के नुक्कड़ पर गए उसको दिखाए वो हिंदी पढ़ के बता सकता है। तो हमने फिर इसमें लैंग्वेज भी डाली, 4 डिफरेंट लैंग्वेज है हमारे एप्लीकेशन में, तमिल है, तेलुगु है, हिंदी है और इंग्लिश है, मोस्टली जो लैंग्वेजेस लिखी जाती हैं, तो ये हमने उसमें डाल दिया। अब इतना सब कुछ होने के बाद जो है अगला ये एक हमारा, हमने आपको शुरुआत में बताया था कि हमारी क्रॉप को ईल्ड, जो क्रॉप की ईल्ड है उसको बढ़ाने के लिए 2 चीज़ें थी। एक था सॉइल की क्वालिटी को कैसे मेंटेन रखा जाए, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारा ये प्रोडक्ट पूरे तरीके से सक्सेसफुल हो गया। इसमें क्या क्या हो गया कि ये आपकी सॉइल को बता देगा कितने फर्टिलाइजर आपको चाहिए, तो ना तो आपको एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ जैसे सिंचाई वगैरह की बात होती है तो हमको ऊपर से लगता है कि मिट्टी तो सूख गई है, जबकि मिट्टी के अंदर नमी रहती है, हम सिंचाई कर देते हैं, एक्सेसिव वाटर की वजह से हमारी क्रॉप को और ज़्यादा नुकसान कर जाता है। या कई बार हमको देख के लगता है नहीं मिट्टी तो अभी नमी में है लेकिन नीचे से वो सूखी रहती है, तो उस केस में हम सिंचाई दे नहीं पाते और कम पानी की वजह से हमारा उसमें भी नुकसान हो जाता है। अब हमारा जो ये वसुधा प्रोडक्ट है ये कॉन्टिन्यूस आपकी मॉनिटरिंग करता रहता है, और जब भी लेवल जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन के लिए अगर जितना पानी चाहिए होता है अगर उससे नीचे गया तुरंत हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको अपने खेत में सिंचाई करने की ज़रूरत है। अगर यूरिया कम हो गया, नाइट्रोजन कम हो गया तो बता देगा आपको यूरिया डालने की ज़रूरत है। आप अगर पोटेशियम कम हो गया वो बताएगा आपको पोटाश डालने की ज़रूरत है। तो हमारी सॉइल क्वालिटी मेंटेन रही, एक्सेसिव फर्टिलाइजर के यूज से बचे, टाइमली हम लोग उसको वाटरिंग कर पाए, उसको सिंचाई वगैरह कर पाए, तो हमारी जो फसल की क्वालिटी है, जो फसल की ईल्ड है वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। अब आई बात दूसरी प्रॉब्लम पर। अच्छा ये तो एक हो गया, अभी इसमें हम लोगों ने कुछ और एडेड फीचर्स भी डाले, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट से मोबाइल एप्लीकेशन पे आना है तभी आपको सजेशन मिलेंगे। अब उसके लिए ये होता है कि आपके मोबाइल एप्लीकेशन में मतलब वो इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि इसका कनेक्शन कैसे होता है, जैसे यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट मेजर करेगा, मेजर करके ये क्लाउड पे भेजता है।
और क्लाउड से हमारा एप्लीकेशन जो है उस इंफॉर्मेशन को फेच करता है और फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे दिखाता है। लेकिन क्लाउड पे जाने के लिए और वहाँ से फेच करने के लिए भी हमको इंटरनेट की ज़रूरत होती है। अब सपोज कीजिए कि हम खेती तो बहुत दूर दूर होती है, गाँव में या कहीं जंगल के आसपास है, वहाँ पे अगर इंटरनेट नहीं है, उस केस में हमारा ये प्रोडक्ट फेल हो जा रहा था, है ना। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि इसमें लोरा मॉड्यूल, लॉन्ग रेंज रेडियो कम्युनिकेशन मॉड्यूल लगाया। अब वो मॉड्यूल लगाने से क्या होगा कि आपको जो है विदाउट इंटरनेट आप 8 किलोमीटर दूर आप अपने घर पे, जहाँ पे आपके घर पे इंटरनेट है वहाँ पे आप, जैसे वो नीला वाला जो है ना वो हमारा रिसीवर है और जो व्हाइट वाला है वो हमारा ट्रांसमीटर है। अब नीला वाला जो रिसीवर है इसको आपको अपने घर पे लगा के रखना है जहाँ पे इंटरनेट हो, और इस प्रोडक्ट से आप 8 किलोमीटर दूर अगर अपने व्हाइट वाले सेंसर को लेकर जाते हो, आप अपने खेती में किसानी में टेस्ट करते हो, आपको जो है इंटरनेट के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपके खेत में इंटरनेट है कि नहीं है। वो बाय डिफॉल्ट वहाँ से रेडियो कम्युनिकेशन से आपके रिसीवर के पास में भेजेगा, नीले वाले के पास में, और रिसीवर उसको क्लाउड पर भेजेगा और क्लाउड से आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर रियल टाइम में देख सकते हो। तो यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई। और उसके अलावा हम लोगों ने जो है इसमें हिस्ट्री पेज भी डाल रखा है। हिस्ट्री पेज में क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि दिन में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इनका कंपोजिशन वो कैसे कैसे चेंज हो रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हर दिन के हिसाब से, आज हमने यूरिया डाला था, आज के बाद अगले 7 दिन बाद हम लोग देख रहे हैं तो क्या सिचुएशन है, कितना चेंज हुआ जब हमने यूरिया डाला था और अभी आज के डेट में क्या चेंजेस हैं, है ना। इस हिसाब से हमको बहुत सारे इंसाइट्स मिल जाते हैं। और उसके अलावा जो है ठीक है, हाँ यहाँ तक हो गया। फिर हम लोगों ने एक और प्रोडक्ट बनाया। ये तो था कि आप ले जाके उसको टेस्ट करोगे। अब बात ये है कि हमारे एक खेत नहीं है, हर किसानों के किसी किसी के 1 है, किसी के 10 है, किसी के 15 हैं। तो अब ये है कि आप एक खेत मान लीजिए यहाँ पर है, दूसरा खेत वहाँ पर है, तो अब आपको हर बार क्या करना पड़ेगा कि आप सेंसर को यहाँ ले जाओ, इसके बाद फिर वहाँ लेकर जाओ, फिर वहाँ लेकर जाओ, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो हमने इसके लिए भी एक सोल्यूशन बनाया कि हम लोगों ने एक जो रिसीवर है उसको एक सेंट्रलाइज्ड कर दिया और उससे एसोसिएटेड मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे लगाया। जैसे डेटा प्रोसेसर ये हमारा हो जाएगा मास्टर, और जो इस सेंसर 1 से लेकर 7 तक हैं ये हमारे हो जाएंगे स्लेव्स। अब ये क्या करेंगे, ये डिफरेंट खेतों में इंस्टॉल्ड रहेंगे, डिफरेंट फील्ड्स में इंस्टॉल्ड हैं। अब वहाँ से वो डेटा को ले रहे हैं और हमारे रिसीवर के पास में भेज रहे हैं, रिसीवर उसको डिस्प्ले भी कर रहा है, साथ के साथ वो लोरा ट्रांसमीटर को भेज रहा है और वहाँ से वो रिसीवर के पास में जा रहा है और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन तक फाइनली आ रहा है। तो अब हमारे जो डिफरेंट फील्ड्स वगैरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो लगभग सॉल्व हो गई। अब हमारे प्रोडक्ट का जो अगला टर्न था वो था दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कि मान लीजिए हमने सब कुछ करके अच्छे से मिट्टी खेत की प्रिपरेशन की, सही अमाउंट में फर्टिलाइजर, सही टाइम पे सिंचाई, सब कुछ की हमने, फसल अच्छी होती गई, लेकिन ये गारंटी नहीं देता है कि आपकी फसल में कोई रोग नहीं लगेगा, क्योंकि वो रोग अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कोई इंसेक्ट की वजह से हो सकता है, कोई किसी और चीज़ की वजह से हो सकता है। तो अब बात आई कि हम उनके रोगों को कैसे पहचानें और सही टाइम पे उनका केयर कर दें ताकि नुकसान कम हो। अब जैसे हमें बुखार होता है तो क्या होता है कि हमारा बॉडी थोड़ा गर्म हो जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते दिखाते हैं, है ना। तब तक क्या होता है कि ऑलरेडी थोड़ा बहुत नुकसान हो गया रहता है, लेकिन अगर हमको बुखार होने से पहले कई बार हमको पता चल जाता है कि फीवर हो रहा है, उस टाइम पे हम एक टेबलेट खा लेते हैं, हमारा काम हो जाता है। लेकिन जब बीमारी हो गई, हमें ऑलरेडी फीवर 102 पहुंच गया, उसके बाद हम डॉक्टर को जाके दिखाते हैं, वो हमको 3 दिन के लिए सुबह शाम 6 टेबलेट खाओ और ज़्यादा, है ना, ये हैवी हो जाता है। तो सेम सिचुएशन जो है हमारी क्रॉप्स के साथ भी है कि अगर उनमें जो रोग लगने वाला है उस रोग को हम लोग टाइमली पहचान लें तो हमें बहुत थोड़े से मेडिकेशन से हम लोग जो नुकसान है वो होने से बचा सकते हैं और क्रॉप की यील्ड अपने आप हम लोग बढ़ा सकते हैं। अब इसके लिए दिक्कत ये आई कि जो फसलों में जो रोग होते हैं ना उनको हम मिट्टी से बहुत कम पहचान सकते हैं। वो दिखते कहाँ हैं, हमारी बॉडी में फीवर में टेम्परेचर गर्म हो जाता है, अगर हमको सर्दी लगती है छींक वगैरह आने लग जाए, डिफरेंट सिम्टम्स हैं। तो ऐसे जब फसलों में कोई रोग लगता है तो उनके सिम्टम्स सबसे पहले उनकी पत्तियों पे दिखाई देते हैं, है ना। कभी पीलापन आने लग जाता है, कभी वो कटने फटने लग जाती हैं। तो अगर जब हम लोगों को दिखना शुरू होता है अरे हमारी पत्ती पीली हो रही है, तब तक तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया रहता है। हमको दिखता है एक कट गया, तब तक ऑलरेडी काफ़ी नुकसान हो गया रहता है। लेकिन कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए, हम लोगों का ये प्लान था कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए ताकि अगर थोड़ा सा भी किसी भी डिजीज़ का अगर नामो निशान तक है तो हम लोग तुरंत उसको पहचान जाएं
और अगर पहचान जाए तो किसानों को सही मेडिकेशन उनको बता सके, और ताकि किसान उस मेडिकेशन को अपने फील्ड में अप्लाई करके और जो नुकसान हो रहा है उससे बच सके। तो फिर हम लोगों ने इसके लिए, चूंकि ज़मीन से जो भी हम लोगों ने बनाया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, मिट्टी की टेस्टिंग के लिए हैं। लेकिन मिट्टी की टेस्टिंग से आप हर रोग का पता नहीं लगा पा रहे, तो अब हम लोगों को डिफरेंट टेक्नोलॉजी की तरफ जाना था। तो हम लोगों ने क्या किया, इमेज प्रोसेसिंग अप्लाई की, क्योंकि अगर पत्तियों पे दिख रहा है ना, तो दिखने वाली किसी भी चीज़ को हम लोग इमेज प्रोसेसिंग से क्लासीफाई कर सकते हैं। अब जैसे क्या, इमेज प्रोसेसिंग का एक बेसिक ओवरव्यू टाइप का दे दूं कि सपोज कीजिए एक पत्ती है ना, वो एक इन्फेक्टेड लीव है। इन्फेक्टेड लीव मतलब कि मान लो येलो मोजाइक है, तो पत्तियां आपकी पीली पीली पड़ जाएंगी। तो एक पीली पत्ती वाला आपके पास इमेज है रेफरेंस के लिए, एक आपने करंट इमेज का फोटो लिया। अब दोनों फोटो के पिक्सल बाय पिक्सल को मैच करवाएगा, और जहां जहां येलो पार्ट उसको दिखेगा, इस पत्ती में जहां जहां येलो पार्ट दिखेगा वो बता देगा कि वो इसके जैसा है। अब कितना पिक्सल मैच किया उस हिसाब से बता देगा कितना % येलो मोजाइक है। यही हो गया बेसिक सा इमेज प्रोसेसिंग। तो हाँ सौरभ सर, ये सौरभ सर थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ये पार्ट। हेलो, सबने खींच ली, व्हाट्सएप पे भेज दी। अब एक बार व्हाट्सएप की पिक्चर को खोलिए, राइट में 3 डॉट्स हो गए, उसमें उसकी इन्फो पे जाइए। इन्फो में उसकी पिक्सल्स की वैल्यू होगी आई थिंक अराउंड 524 क्रॉस या 1080 क्रॉस 720। वो मोबाइल के अकॉर्डिंग होगी, अगर एचडी में नहीं भेजी होगी तो। नॉर्मल में वो क्या हो जाती है, इमेज क्या होती है हमारी, कंप्रेस हो जाती है। अब उसी इमेज को एक बार जूम करिए जो व्हाट्सएप पे भेजी हुई है, हाँ, उसे जब जूम करेंगे तो वो थोड़ी फटी हुई दिखेगी। और जो नॉर्मल अपने कैमरे में देखिए फोटो वापस जाके, तो उसे जूम करेंगे तो वो एकदम क्लियर दिखेगी। तो ये क्या होता है कि जो नॉर्मली, जैसे ऐप के बारे में बात करें, ऐप तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी है। आप अभी प्ले स्टोर खोलेंगे, प्ले स्टोर पे आपको प्लांटिक्स मिल जाएगी, डॉक्टर सोयाबीन, डॉक्टर किसान, बहुत सारी मिल जाएगी। पर जो मेन इशू हमने देखा वो क्या देखा कि मेन जो फीचर्स बताते हैं, इस कोई भी इमेज के फीचर्स बताते हैं उसके पिक्सल्स। कि सपोज एक अगर इमेज में 3x3 एग्जाम्पल के लिए लूँ, तो 3x3 में 3 रोज हो गए, 3 कॉलम, तो 3x3 टोटल 9 पिक्सल्स हो गए। तो वो 9 पिक्सल जब एग्जैक्टली मैच करेंगे तभी वो एक्यूरेट बता पाएगा। अब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे पास एप्स है, उसमें क्या है कि सपोज अगर हेल्दी लीफ है, यही वाली हेल्दी लीफ है, इसकी जगह जैसे मैम ने अभी ग्रीन पहना हुआ है, अगर मैं साड़ी की भी फोटो ले रहा हूँ वो दिखा रहा है हेल्दी लीफ, पर ये लीफ है नहीं। तो सबसे पहले हमने अपने जो ऐप बनाने में सबसे पहले हमने यही चीज़ करी कि ऐप बनाने से पहले वो ये आइडेंटिफाई कर पाए कि जो चीज़ की वो फोटो ले रहा है क्या वो लीफ है या वो लीफ है नहीं। अब कोई भी सपोज येलो मोजाइक में जैसे बताया कि लीफ येलो हो जाती है, अब मैं फोटो ले लूँगा, ये तो येलो है, और वो ऐप दिखा भी रहा है मेरे को कि भाई येलो मोजाइक है, पर ये दीवार है, दीवार को तो मैं पेस्टिसाइड डाल नहीं सकता। तो इसलिए हमने जो ऐप बनाई इसमें हमने 3 पाइपलाइन रखी कि पहले वो ये बताए कि लीफ है कि नहीं है। अगर वो लीफ है फिर उसके बाद वो देखता है कि वो हेल्दी है या हेल्दी नहीं है। अगर तो हेल्दी है तो हमारे लिए सही है, अगर अनहेल्दी है फिर वो आगे वेरीफाई करेगा कि कौन सी डिजीज़ है। अब जो पुरानी ऐप्स है उसमें क्या एक है, ज़रूरी नहीं कि एक लीफ में एक ही डिजीज़ हो। जैसे कि यहाँ पे भी इमेज में आप देख पा रहे हैं,
इस इमेज में अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ग्रीन लीफ है, अगर किसी भी ऐप में डालेंगे आप सेम इमेज लेके डाल सकते हैं, ये हेल्दी दिखाएगा। बट इसमें जैसा यहाँ पे देख पा रहे हैं तो इसमें 2 टाइप के स्पॉट्स हैं। ये स्पॉट्स है जिसके आसपास कोई कलर नहीं है, और यहाँ पे स्पॉट्स है इसके आसपास थोड़ा ब्राउन सा है, ब्राउन कलर के स्पॉट्स है। तो जो ये वाली डिजीज होती है, ये होती है हमारी ब्राउन स्पॉट डिजीज, और ये होती है फ्रॉग आई डिजीज। अब जो अभी तक के ऐप्स थे वो क्या कर रहे थे कि वो एक ही डिजीज बता रहे थे कि सपोज सबसे ज्यादा उसको इसमें दिख रहे थे फ्रॉग आई, जिसके अराउंड कोई भी अपना ब्राउन स्पॉट नहीं है, कोई भी ब्राउन स्पॉट नहीं है। तो हमने क्या किया कि वो पहले अपनी ऐप में अगर उसमें एक से ज़्यादा डिजीज़ भी हो तो वो एटलीस्ट 2 डिजीज़ बताए कि उसमें कौन कौन सी डिजीज़ है। अब इसमें भी ये है कि कोई डिजीज़ को वो ये जो परसेंटेज इसमें दिखाई गई है जैसे 93.08%, ये उसका कॉन्फिडेंस लेवल है कि हमने एक डाटा सेट बनाया। डाटा सेट भी जो हमने इनिशियली लास्ट ईयर किया था, लास्ट ईयर हमने क्या किया, शॉर्टकट कि हमारा ऑलरेडी नेट पे डाटा सेट है, गिटहब आप खोलिए, गिटहब से डाटा सेट मिल जाता है, वो हमने यूज़ करके उससे एक ऐप बना दी। लेकिन जब वो हम प्रैक्टिकल लेके गए तो वहाँ पे हमें क्या कमियाँ मिली, वही जो सेम अभी बता रहा था। क्योंकि और दूसरी चीज़ ये कि वो जो डाटा सेट है वो इंडिया का डाटा सेट नहीं है, वो है विदेशों का, यूएसए का है, चाइना का है, फिर ये जर्मनी का था थोड़ा सा, तो उसमें इंडिया के लेवल पे नहीं बन पा रहा था। अब उसके लिए हमें पहले 1 साल तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सोयाबीन की खेती होती है आपकी जुलाई से लेके सितंबर। तो इस अभी मतलब लास्ट ईयर हमारे पास 1 मंथ ही था, तो तब हमने डाटा कलेक्ट किया, और अभी जुलाई और अगस्त में डाटा कलेक्ट किया। और इसमें जरूरी नहीं कि हम पीएचडी वाले ही, इसमें भी एक मतलब सिस्टमेटिक काम चलता है कि जैसे जो बेसिकली हम पीएचडी के हैं सारे, हम पीएचडी वाले क्या करते हैं, मेन जैसे प्रोडक्ट का बेस बनाया या मटेरियल बनाया, लेकिन उसको जो आईओटी से कनेक्ट करना है, अब वो अगर हम ही हर चीज़ के मास्टर होते तो हर कोई ही ये सातों के सातों अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स ही होते। तो इसके लिए सबका साथ सबका विकास चाहिए होता है। तो अभी इसमें हमने एक क्रोनोलॉजी बना रखी है कि हम जो है मेन प्रोडक्ट का आउटर व्यू बनाते हैं, और जो मटेरियल जो है कि एक्चुअल टेस्टिंग कर रहे हैं वो बनाते हैं। जो एमटेक या एमएस का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होता है वो क्या करता है सर्किट पार्ट पे, क्योंकि वो सर्किट पार्ट में हमने एक्सीलेंट होते हैं। और जो बीटेक्स वाले होते हैं वो होते हैं एआई आईओटी या फिर उसे मोबाइल से कनेक्ट करने में एक्सपर्ट। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारे कोई भी अभी जितने भी प्रोडक्ट दिखाए तीनों के क्या कहते हैं मेल से बने हैं, ये इंडिविजुअली नहीं बन सकते। अब कमिंग ऑन टू वापस अपने ऐप पे, तो ऐप पे जैसे हमने अभी सोया केयर ऐप बनाया है जिसमें अभी टोटल 6 डिजीज और हेल्दी लीफ है। तो जब हम इस ऐप को खोलते हैं तो इसमें हमारे पास आती है डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, इसी की एक्सप्लेनेशन भी होती है। जब भी आप इसे क्लिक करेंगे तो इसमें बता देगा कि ये डिजीज क्यों होती है, कैसे होती है, और इससे बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। फिर उसके अलावा हमारे पास अलग अलग हमने ऑप्शन भी रखे हैं, जो जैसे कि हिस्ट्री ऑप्शन में क्या है कि हमने कोई इमेज अभी ले ली, आज के दिन ले ली, अब हमने पेस्टिसाइड लगाया, हफ्ते बाद हमें देखना भी है कि वो एक्चुअल में वर्क कर रहा है या कर नहीं रहा। तो उसके लिए हमने हिस्ट्री पेज भी बनाया कि कि जब टेस्ट हो जाए तो उसके बाद अगर हम हफ्ते बाद उस पर मतलब हमने मेडिसिन दे दी उसे, क्या वो एक्चुअल में सही कर भी रहा है या नहीं। तो उसके लिए हमने हिस्ट्री पेज भी लगाया जो कि अभी किसी ऐप में नहीं है। उसके अलावा ये हमारी ऐप का जो है फ्रंट पेज है जिसमें वो टेम्परेचर बताता है, डेट बताता है, टाइम एंड प्लेस जहाँ पे हमने फ़ोटो ली। तो और जब फोटो ले लेते हैं उसके बाद वो डिटेक्ट करता है डिजीज़ की कौन सी डिजीज़ है। फिर उसके बाद जैसा कि बताया था, जब हम क्लिक करेंगे किसी भी जब होम पेज पे किसी भी डिजीज़ पे, तो वो उसके बारे में बता देगा कि वो डिजीज़ कैसे होती है, उसके प्रिकॉशंस क्या है, उसको मैनेज करने के लिए हमें क्या क्या करना है। फिर उसके बाद जो हिस्ट्री पेज जैसा कि दिखाया हुआ है कि हमने सेम लीफ पे 24 अक्टूबर को हमने वेरियस प्लेसेस पे हमने फ़ोटो खींच के उसकी डिजीज़ टेस्टिंग करी थी। इसके अलावा फिर जो एक इशू बताया था कि फार्मर्स को अपनी लैंग्वेज में चाहिए होता है, अगर हम इंग्लिश में डाल दें तो इंग्लिश में नहीं होगा। तो इसमें हमने एक्सपेंड करी है लैंग्वेजेस अप टू 6 लैंग्वेजेस, दैट इज़ इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मराठी, क्योंकि मैक्सिमम जो सोयाबीन की खेती होती है वो इन्हीं एरियाज़ में होती है। बाकी हम इसे अभी एक्सपेंड भी कर रहे हैं टू इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। नब ये तो होगी ऐप की बात।
अब मेन इशू आता है कि फील्ड विजिट में चैलेंजेस क्या होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे सारे मैनेजमेंट के मैक्सिमम मैनेजमेंट के बैठे हैं, यहाँ पे जितना मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि सर्वे तो होता है, सर्वे होता है, फिर बिजनेस स्ट्रेटेजी ये सब लगाई जाती है। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि अगर आप मेरी जगह फील्ड पे जाए मिट्टी कलेक्ट करने या फोटो खींचने, तो आपको क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं? यस यस ट्रस्ट इश्यूज, यस। तो ये हमने भी फेस किया सबसे पहले। फिर इसका आइडिया जो हमने हमारी जहाँ से शुरुआत हुई थी, चाय की तपरी, तो सबसे बेस्ट तरीका है जहाँ पे किसान बैठे हैं, चाय की तपरी पे जाओ, एक से बात करो, वहीं से शुरू होती है। अब तपरी पे तुम एक बार बैठ गए, उनको ऐसी बातों बातों में कि हमने ऐसा बनाया है, ऐसा हम सोच रहे हैं टेस्ट करने का, तो वो एक किसान अपने खेत पे लेके जाएगा। तो ऐसे ही किसानों को लेके अब जैसे ही एक किसान पे जाएंगे, अब वहां पे मिट्टी, यस सर, And by looking at probably them, you might be thinking that you know better than her, you know better than him, but that is not the case. They know better in many ways than us. So if you need to talk with them, we keep on learning the same thing in our school days to our parents, like humility. You have to be humble. You have to be down to earth. You should not think, I am coming from IPS, I am coming from IIT. No. First you have to be grounded, then only you will be able to communicate. Okay? And there is a role for each one, every one of us. That is what we keep on also telling you, that it is not a question that only IIT people can do. No, you can also do. Like she has joined recently with us, and she is a management PhD, right? Working with her. So she is also visiting and traveling with us. So if you want to get experience about how an IPS student is feeling like going to agriculture, then you can speak with her. Okay, so that's what in your organization structure slide, I found CEO marketing missing or director marketing missing. That will come from us. That will be also. Yes. This is a huge thing, and while our interactions for over the several years, we also could know actually from them that many of them are discouraged. The thing that runs in the veins of each and every one of us is actually money. Even if you look it in a different way, but that actually runs the system. So it is also for them. Their kids are disheartened that why I should be doing agriculture, why I should be doing plumbing, when my friends are doing something else in the city and they are earning more. So this is the thought process. So unless and until you enhance the productivity, unless and until you enhance the cultivation of products, then eventually you will be losing. You will not be losing, you will be losing also. Yes. You will be afraid about getting anyone to the field, then you will not be having, you will be devoid of food. Okay, so you end up basically importing from other countries, and eventually they will be having our market. That is what people are looking for. Okay, that is what we are not going to let it happen. Okay, so that is the motivation, and this motivation we need each and every one of you assistants. So please come and join with us. It will be helping you professionally, and in terms of also besides profession, it will give you mental and pleasure to do that. Okay, please come. So जैसा कि बताया, सबको पता है यहाँ पे सब मध्य प्रदेश सोयाबीन स्टेट ऑफ इंडिया है, पर सोयाबीन की कितनी प्रजातियां होती है टोटल जो इधर उगाई जाती है? एनीवन? हाँ, 13-14 मैं नाम पूछ रहा हूँ, जस्ट नाम वो जैसे आपको नहीं पता वैसे हमें भी नहीं पता था। अब हम जब टेस्ट कर रहे थे तो डाटा सेट बनाने में हमें फिर अभी मैं इश्यूज की बात करूंगा क्या क्या हमें हुए। पहला तो फार्मर का, जैसे सर ने बताया ही। अब फार्मर में भी देखो, एक हमारे पास 2 ऑप्शन थे,
या तो उनके साथ बात कर या तो एक दिन में हम 20 सैंपल ले लें, या एक दिन में बात करके उनके साथ इंटरेक्शन या फिर एक फैमिलियर इन्वायरमेंट बनाएं। जो कि इनिशियली हमारे जो सीनियर्स थे, चंद्रभान सर, मयंक सर, सुमित सर, और उस टाइम विकास भी था उनके साथ। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया इसमें, मोबाइल पे था, तो इन्होंने इतना अच्छा इन्वायरमेंट बना दिया था कि कहीं पे भी जाते थे, अरे आप आईटी से आ रहे हैं, आइए आइए पहले चाय पीजिए। तो हम डेली मतलब बेसिकली कोई भी अगर प्रोडक्ट हमें मेन मार्केट में लाना है, जैसे अगर मेडिकल का लाना है, तो उसको डायरेक्टली ये नहीं कि हमने बना दिया वो ठीक वर्क कर रहा है वो भी चल गया, पर उसके लिए हमें कुछ साइंटिफिक या गवर्नमेंट लैब से अप्रूवल भी चाहिए होता है। जैसे अभी नहीं यूरिक एसिड सेंसर है, उसकी अभी टेस्टिंग एम्स में चल रही है। और ये अपना सॉइल का है, सॉइल के लिए भी ये नहीं है कि हमने 10 सॉइल टेस्ट कर लिए, 10 सॉइल के बेसिस पे हम उस चीज़ को मार्केट में ले आएंगे। उसके लिए हमें अप्रोक्स 10,000 ऑफ सॉइल सैंपल्स चाहिए। जब वो एकदम हमारा प्रोडक्ट और जो लैब रिजल्ट है अगर वो एक दूसरे के साथ मैच करेंगे, तब जाके गवर्नमेंट उसे अप्रूव करती है कि हाँ ये अब मार्केट में आ सकता है। सेम इज विद द सोयाबीन। तो सोयाबीन के लिए भी हमने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में प्रोफेसर दीपक कुमार, वहाँ दीपक सिंह है वहाँ के प्लांट पैथोलॉजिस्ट, उसके अलावा मनोज कुमार सर जो इस वर्क में हमारी हेल्प कर रहे हैं। और मतलब डाटा सेट जो हम फोटोज़ ले रहे हैं, अब जो हमें लेमन लैंग्वेज में बताया कि येलो लीफ आ रही है, तो वो अपनी येलो मोजाइक होगी। वो जैसे वो छेद वाले बताए थे, होल्स वाले फ्रॉग आई, तो वो उस डाटा सेट को कंफर्म करते हैं कि जो हमने डाटा सेट एक्चुअल में बनाया वो एक्चुअल में है भी या नहीं, या हम भी वो जो ऐप बनी हुई है उसी में एक और ऐप बना के छोड़ देंगे। क्योंकि हमारा मेन टारगेट है कि वो एक्चुअल में वो ऐप फार्मर्स पे पहुंचे और फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचे। क्योंकि अभी जो एग्जिस्टिंग ऐप है, जब हम इसका कंपैरिजन बना रहे थे तब हमने देखा वो ऐप क्या करती है, बाकी ऐप्स 10 बार तुम्हें टेस्ट बता देगी फ्री, उसके बाद आ जाता है गिव 5,000 एंड गेट 1,000 टेस्ट फ्री। तो बाद में अगर किसान को 5,000 रुपये देने ही है, वो तो फिर नॉर्मल जाके अभी जैसे कर रहे वो तो वही बचाएगा, क्योंकि उसको पहले एमएसपी पे तो मिल नहीं रहा है। वो जैसा कि सर ने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि किसान को फर्स्ट डे में उसको जितने पे मिला, सेकंड डे पे कुछ अमाउंट मिला, थर्ड डे पे अगर वो 300 में भी बिक रहा है तो 300 पे क्विंटल पे बेच देगा वो, तो उसमें उसका लॉस ही होगा। तो हम एक फ्री ऐप बनाने के लिए अभी इतना कर रहे हैं। और फिर और क्या चैलेंजेस थे? और याद करो चैलेंजेस तो देख लेते हैं। हाँ, यस, soil testing and yeah. These kind of apps do exist, okay, and the most prominent app that is existing is from Germany, Plantix, the name of it. And how do they do it? Like they let you use 10 times for free. So after that you need to pay. After that, so there are many ways. Our motivation is not to get profit out of it. Our basic aim that people should use, and if it is beneficial for them, it will be good. Like we are not here to earn something. We are basically help people so that eventually their household income should enhance in terms of the agriculture. So that is how still we have been pursuing in that way. This is going to give us an indirect benefit of our fraternity, the next generations, to get profit out of it. That is actually I was reading one of my emails. So this is project on climate resilient agriculture, government of Maharashtra. Now they are trying to actually get a better product as compared to Plantix. They are also referring to Plantix. Image-based classification on agriculture. They selected 15 crops as of now in India. And since our product is identifying for, mainly we have tried for soybean, and soybean is one of the 15 crops they have targeted. So they are interested to get it commercialized. So we will be happy to deliver it to them. So it is up to them. We will be very happy to help. 2 weeks back, we had an email. So I was just looking at my email because I forgot the name Okra, So that is our motivation to go for this aspect as of now. Yes.
Absolutely. Climate will be affecting that. As of now, we are studying soil and how it is going to affect the crop. In terms of crop, we have identified soybean. So this is the target. As of now, we are going. Down the line, we will be incorporating weather effects also. But that comes later. Because to do this study also, even if we are doing for them as free, but it also involves, manpower, it involves a lot of financial thing we are managing. But definitely, that's a very good suggestion. Weather affects that. Rainfall, then wind, then humidity. This affects temperature. It affects. But that will be the future way to go. But whatever way, as of now in the agriculture domain, we are doing everything for our customer to get for free. This is the motivation. So one more suggestion that insects are directly affecting the crop. Insects are directly affecting the crop, and your system is telling through the image processing that indirectly if the crop is infected by any insect. So this system is telling that thing. So No, there are two versions of it, as it was also mentioned. One is the soil nutrient identification, and another is the disease manifestation. Disease manifestation we want to pick up at the early stage, so that the further manifestation should be prohibited. And if we can detect it early, we can apply proper levels. and what cost it will cost to the farmers, and now what strategy? As of now, zero. So different experiments you can establish the farmer if he is having different legs. They do not have to go anywhere. Like these are the always we are stressing on the thing, field visit, on-site study. Right now, the amount of rupees it was mentioned, one soil sample study in Government of India lab 1600 rupees. That is one aspect. Another aspect is the sample should go there, result should come after 5 days. And our case is solution directly within a matter of 20 seconds in front of you. But sir, in KVK set up by government, they are testing soil, I think, in within 500 rupees. But I don't know the complexity of it. We visited KVK and they told us. Again, Krishi Vidyalaya, if you are going, there are several different KVKs. Right. But always you need to give them the data which is calibrated. That is what also, I think initially it was mentioned. Many Chinese sensors are here. Not only Chinese, many sensors are there. But you take same soil sample, it will be giving you different values. So how to rely? Because lecture 1, you remember the figures of merit for sensor reliability. You purchase iPhone based on reliability. You do not want to call your mother and eventually it will be a sister, right? You will not be getting that phone. So reliability matters. So our is calibrated sensor. So that's why nowadays, like you go to the market, you will not be finding any calibrated agriculture sensor. Nobody claims calibration. Yes, I also think that they are not effective. Yes. They are just government. Yes. So we are providing calibrated sensors and we are providing measurements, parameters for them free of cost. We want our patent to be licensed if it is government of Madhya Pradesh or government of Maharashtra. Eventually for India it is okay. Satisfaction is huge. So even for the type of soil, like the results would be different in black soil if you have tested it. Yes, yes, yes. And that's why eventually, like one of the parameters which we came across, that in Madhya Pradesh soil, mainly soils in agricultural land in Indore, it has so much of potassium. And farmers, they keep on adding potassium to get more soil. So basically, they are wasting their money. So we are doing now case studies that if you save this money, it will be giving you again more money. But that we can showcase to them when? In the next season of soybean, starting from next July. So before July, we are just preparing these data sets. Okay, hello everyone. So, He is Ramadan Mahapatra.
finance officer of our startup. So, please do. So the first person was from Ayodhya, second person Saurabh from Haryana, he's from Odisha. So, I think a lot of economics people are there, so can I get a hand for them? Okay. So, basically, whatever I am going to talk, I am like... Yes, I forgot. First person, Poonam, was from, I don't know, Rajasthan, Bihar, and Odisha. He is from Odisha. And she says different places. So, explaining the finances is like running a race with a cheetah. So, you people all are already well versed with all the things. And here we are trying to share, so Quantep L2M, it has been like 3 years. So, we have started this startup and we are just sharing our journey with you. And I will be going over the things that sir has pointed out. We have not appointed any advertisement partners and all those things. So we will just do some exercise and brainstorming here and just share our journey with you. So our technical team here till now, they have shared what we have done, how we have done, how we are one of the leading material researchers in the world, and how we are trying to translate that ideas and technologies into the market of India. And even while doing so, we are facing some challenges, but we have a lot of advantages in the domain of technology. But since we are engineers, and obviously Pallavi ma'am is here to guide us through a lot of economic and marketing stuff, still we are trying to figure out how we are going to reach the market, how we are trying to improve the product and all those things. So this slide here represents, so basically Saurabh sir and Vikas, they have told we are going to various farmers and we are trying to take the data. But that data we are also calibrating with the College of Agriculture, and we are providing them with the calibrated data. So we are doing this test for free. So it is benefit to us that our product is getting calibrated and benchmarked. And also the farmers who are supporting us through this journey. So we are giving back, like we are giving them free reports and advices on how to do this. So this photo here, the Gram Panchayat Simrol, so we have done this for the past 2 years. We have gathered the farmers for a cup of tea and we have shared them the results, and we have also discussed like how you can improve your productivity yield. We are planning various other things for the future, but for now we have done this and we have taken feedback like how did you like using our product, how was your experience, did you have any problem with the apps, and we took the customer feedback and we tried to improve on that. So being from the technological background, it is not a very difficult thing, but to reach the people, to convince them, to make the product a well-known thing, that is one of the major challenges we are facing. And so before proceeding, so can I know how many people here have their own startups? Ma'am, please again. Okay. Okay. So hopefully we can share our finance manager. So thing is, for startup, first we need an idea, and then we need to see if our idea is already in the market or not. So we need to do a market analysis of that. So first, lot of people have lot of ideas. So some are into drawing, some are painting, some are singing. Many things they are doing, and some of it is monetizable, some of it is not. So first term, I think all of you are already aware of that. Yeah, CAGR value, cumulative annual growth rate. So we are trying to see whatever idea we have and whatever domain we are going to enter into the market, how fast it is growing. If it is steady, then maybe not a lot of development has happened over the past few years, or there are various factors. So this is one of the parameters, and also we will try to see
the market segmentation. So here we can see, you know, all of us know our agriculture based product. So some of the parameters are given for the agriculture product here. So you can just see the relations here. So we can see that there are capacitive soil center, resistive potential soil sensor and other. So a lot of technologies are there already. But then we come to think what is the unique market value proposition, what is the what do we say, USP, unique selling point. So your idea need to have one point which is unique to you. So basically we have shown, I don't remember if anyone has said, we have a lot of patented technologies and already, so basically you need to have something that only you can provide. Otherwise other people might easily copy you and you will have direct competition without any effort from the other side. So, and the key industrial developments, so what are the developments once you enter the market? Obviously you need to keep a track on these things. And again, regional analysis, like IoT based agriculture, if we have started this in 20 years prior, then it would have been a lot of difficulties, because in America maybe people were understanding that we need to make things IoT and automated, but in India even now we are struggling to push this technology, but we feel like the time has come to do so. So these are the market analysis we are doing, and before starting the startup all of us must do. And also we need to evaluate the competitive landscape, because whatever idea you have, so somewhere, I don't know where, but in one seminar, one professor told that it is impossible to have a new idea, because there were so many people in the past and they have so many thought. So whatever you thought, maybe this thinking has been reiterated thousands of times in the past, but it is about the timing. So for now, maybe it is possible. It might not have been possible few years ago. So you need to see whatever you are thinking, other people might have thought so, and you can see here the competitive landscape for Basudha, our product. So as Vikas have already told, so okay, there is no pointer. So you can see a lot of products here, but none of them are indigenous product developed in India, and we don't have a calibrated product. So they don't provide that, yes, whatever reading we are giving, it is actually reliable. So with these things, we are trying to proceed into the market, and we are trying to pitch to the VCs that our product is giving some result which is certified by experts, and also it is well validated technology, and we have developed this totally in India, and we have used some unique technologies which are unique to us, and all these things make us separate from the existing technology. And also we are trying to see, you can see the cost here. So this is just the bill of material cost. So to make the raw product, how much cost is getting used. So even with marketing cost and all that, we can still make an affordable product which our farmers can purchase and use. So it is a highly viable product for Indian landscape. So Vikas, do you know that? Japanese. Okay. And what, huh? Rico. And what about 4,83,000 rupees? Goyojo, from which country? It also sounds Japanese. It is Japanese. Japanese? Yes, ma'am. So in this entire table, the only Indian is our product? The Quantec L2M? This last one is Quantec. 16,000? Yes, ma'am. Yeah, okay. So to add to this, many things are missed out here. The things which are missed out here is the pricing part of it and the specifications of the product, amenities that will be provided to you. The product we are just terming here is the Vasudha. Vasudha is the wireless communication connected or integrated to your soil tester. None of the products has that. It is for the real-time sensor
and multiple nodal sensor giving the values to your home. So this is not a good comparison at all. This should be a single soil tester that we have made. So Vasudha, two products we have mentioned in the earlier slides. The first product is the Vasudha, the latest product was the Vasudha, and the previous product was Dharti. So Dharti may come over here, but Dharti also gives you a data on a real time basis. Across a day, what is the variations of the soil nutrients, across days in a week, across weeks in a month, across months in a year. That none of the products give to you. So this slide we generally made because many VCs, summit, they keep on asking us about fund. What is the cost? So it is very difficult to give you the cost. So that's why we are telling the build of materials. But 16,000 is the build, not the build of materials for Vasudha. It is actually maybe build of materials for 30. But 30 features we have not highlighted. This is not available in the commercially available those products. So this is that is what we need you to guide us how to make this slide, because it is very, very difficult. And the market is not there for such type of products. So how to even compare? Because at the end point, everyone wants or loves to hear about what is your unique product. Money is coming out. But it is very difficult. It is very difficult. Challenges in terms of financial budget. Yes, these products we are making based on the fund that we are having from another projects. So we are surviving that way. And several field trips we are doing. We are also paying from our pocket to go to Government of India labs and get the soil sensors calibrated. Farmers are not paying, but somebody has to pay. So even if you are just showcasing your products and the applications to everyone else, you have to show the results. The results do not come for free. So somebody has to pay, that is us. So we are still hoping that somebody would be interested to take it further or provide something to us so that we can take more soil samples testing done or we can help more farmers. So eventually somebody will be coming. So that is our motivation to go forward. So what are the major classification of cost? Major classification components, soil sensors. If you go back to the table that you have mentioned, the product specification table. Okay. Yeah, let us say lithium battery, let us say micro USB, the power supply, OLED screen, organic LED screen, or the packaged part of it. So these are the cost components. So the more add-on you are going to have, then basically you have to also pay for that. So these are the features. We are not calculating the features or the cost component for manpower, electricity for usage of the instrument. For example, 3D printer is used for the packaging part. We are not calculating those. PCB printing, payment, we are not including those cost of things. So this will be added. So let us say, for example, if 16,000 is the cost, for example, for one product, but if a company comes and says, I will be producing millions of those, cost component will go high or low? Low. If we scale up, it will go low because Low. fixed cost is going to So be those fixed. components we cannot calculate. It is just, we just make a asterisk mark saying that if it goes for large scale, production value will go down. As of now in the lab, we have made, let us say, 5 centimeters of that product. There may be a company like nowadays IT have started a BTech program in design engineering. We have just recently launched, in which management people are coming. Because if somebody gives you a product, besides the technical features, each and everyone loves to see how
Okay, so again, just the similar analysis for our uric acid monitor. So here one thing is that there are a lot of key players here, and also the basically I will discuss this in the business model. Okay, so not I will discuss, but we'll just have a exercise, and again here we can compare. So most of them are from one is from Germany, I think, and other are from Taiwan, a Taiwan based company, and okay, China, Taiwan, and one here we have made for from India. So again this product have already been discussed, and again for heavy metal ion detection. So one very unique thing about okay, so I think this has been emphasized, right, that wait, so okay, so Vikas has very perfectly he has described how the need why the farmer needs our agricultural product, and sir has already discussed why we need this point of care uric acid monitor, and also we can see here. So basically from the table, like from the last time, we are at a severe advantage here to launch our product. And again for water sensor also, so heavy metal ion detection in water. So sir has already discussed the need. So I will just emphasize one thing. So you can see here the cost of equipment. So you can see, so this is 2.8 lakh, 1.4 lakh, 11.5 lakh. So these are very generalized equipment with sophisticated technology. So even none of us can use this equipment without proper training. So one of the important and convenient feature is that our product is not just cost effective, so anyone can afford it. It is also very user friendly. So like if a farmer wants, why would a farmer want it? If the municipality wants to check the quality of the water in the city, so they can just purchase our product instead of spending lakhs and further the maintenance cost and the training cost and the scare of being equipment being damaged and maintenance. So we can just pitch our product and sell it to them. So just last time also we have discussed about the business model. So this is the business canvas. So Basudha we are well aware of. So can anyone think of any other partners apart from this? So we are trying to make the product. So what are the partners we are trying to seek? Because these are the kind of things when we start a startup, we have to chalk this out, that our startup, our business is going to look like this. So business canvas, it is a standard practice, I think all of us are aware of. So does anyone have any further addition to this? So let's just start segment by segment. So for partners, so we are dealing with a lot of hardwares. So we have hardware partner. As Saurabh sir has mentioned, so we have the app. So we need app market, and we need to register our app in the market. So that is one partner. And then we have retailers and cooperatives. So basically through which, and also the government agencies, through which we are going to send our product to the masses. So they are a partner. And also universities and research institutions, as sir has discussed. So we are trying to calibrate and get the reliable data. So that's why they are a partner. Any other things which we can think of, which we are missing here? Why just government of India? The product could be international also. And then one more thing that there could be an intermediary. See, you are a technical person. Yes, sir. You cannot, you don't go to retailers, find some wholesalers or somebody who is in between retailers. I mean, my point is, so I could be sound like devil's advocate, but no, sir. Before you say anything, we I just need more yes. devil's advocate, please. Yes, sir. Please. We need to have more devil's advocates.
The first question is, what is Quantech's core competency? So our core competency is Sensors. That is, we are trying to bring it to the market. So that is what I'm saying. So why not make a business model just to provide sensors to the companies or the kind of sensors industry need? Why you are making, okay, these are a good portfolio to start, but market yourself that you are one of the best sensors maker in the India. Or Now, in terms of market, you are referring to industries. yeah. So here, in our cases, in many cases, our market is the customer, B2C, agricultural lands and farmers. That is what I'm saying, sir. This is my. It is not the model that always B2B is going to succeed. There are models also B2C. Okay. That's why our customer is the farmers. And the second thing that you said that your kidney detection product don't have market. I just Googled and I found out that it is among the top 10 causes of death in India. Yes, there sir. are around 800 million. Number third in terms of Yeah. most damaging And there are around 800 million people who are suffering from chronic kidney disease, 100 million in India. On top of that, most of them don't know that kind of disease. yes, exactly. We are 35 people sitting over here, and 1 in 7 have that kind of problem. So, one is me, and then it means that 4 of us, I know I am Sorry to hear that, sir. 4 of in this group has a potential kidney problem. I'm marketing your product. So my point is that we have to create story. आपने आया सब कुछ बताया, technically बताया. You have to make present of that way. Why it is important? There is a big market. That's what I'm saying. Yes, sir. You have to come to think in that way. Commercially आपको समझना पड़ेगा. बहुत बड़ा मार्केट है और डर जो होता है वो बहुत अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट होता है. मैंने आपके लिए 25 लोगों का तो नहीं बना दिया कि अगर आपके पास है तो मैं अभी प्रूव कर सकता हूँ कि 25 लोग यहाँ पे उसको टेस्ट करेंगे. That's why there are different strategies to get this product to the market. Taking a product, for example, life insurance, and you tell others the impact that is having. Then Virat Kohli is telling you that life insurance is good. It creates another impact. How many of you have seen in the advertisement in the market or somebody is telling that you should be having glucometer? Have you ever seen a commercial? But still people are buying it. Out of 40 people over here, maybe 30 of those people are having the blood glucometer made by some company in our home. But who wished for that? Nobody. But still we have it. Uric acid is a common problem. Creatinine issue is a common problem. But who has the meter at home? None. Probably I can clearly say none of us. We have it. But it is a problem. I saying that this is important, that is something else. Amitabh Bachchan is saying for that. Definitely. The market will rise. So I'm just telling you one example. There are many examples. There are many examples, along with examples of doctors also. Usually health products, that we have realized quite, like 1 or 2 years ago, health products marketed by doctors are the best way to create a market for them, for the customers, like for the patients. They won't directly trust you. They won't directly trust you probably, but probably if their doctor, if their house physician, a family doctor, if they say that you must use this, like for example, if recently we have some people who have gone for pregnancy test. Ritu, can you tell me what was your first pregnancy test? Was it in a strip? Yes, and that was a strip which was invented. And that can tell you whether you're pregnant or not in just a few seconds probably. Use at home also, that doctors are using. So if our product goes to the doctors, I don't know why it is not working. None of the mic is working. But I'm audible? Let's see.
But the thing is, if probably, that is what we have thought about, if we take our product, we market it to the doctors, obviously after AIMS Bhopal gives us a absolutely clean sheet. You're accurate, you can go into the market. First, we can plan with the doctors, they can market the product, tell their patients probably that, see, this is a new device. If you supposedly have a disease, or probably you're in the line of getting a disease, which is related to kidney, you should have it at home also. Here in my clinic, you can test it. We can get the results. Immediately I can diagnose. I can give you some medicine. And then I can recommend. You can get it at home. This can also be an idea. Like glucometer, like pregnancy test kit, which is used by doctors in their clinics. So the product is bought not only by the customers, the people who are pregnant would to be mothers, but also by the doctors and their clinics. So we want more such ideas. Once the product is accurately ready, because whenever we have a conversation, every Sunday we spend together in some kind of a program or an outreach, either with farmers. Oh, thank you, Brahmada. Either with farmers or with other people. So we sit, and then in Chai Ki Tapri again, from 4 o'clock in the evening to 6, I listen to everybody, I give them gyan, and we all are together, planning strategies. These people are the ones who don't want money. Then I tell them, you must have money to make the other people get benefit out of it. So my job here is to make them realize that, eventually, to create an impact in the masses, we must look at something which is sustainable, clearly, must go into the market, must go to the people. And as they said, this was my idea. My idea was right in the beginning one thing. They were doing great work, technology people, scientists, IITians, but I wanted their research to come to the people because I'm an economist. My job is to see the people's sciences, social science, science for the society, science for the society. So going to the people is our number one motive. Creating sustainable business models is the second step, the next step of the business. So more suggestions and more questions, please. Thank you again, sir. That was a good suggestion to go to the B2B. But one thing we have noticed, one more thing which sir has missed is we have noticed that for these healthcare monitors, when we try to purchase our competitors' products as well, so they have clearly, so they are not doing their, I don't know, I can't blame them properly, but from what it seems, their research may not be complete or there is a gap in research. So they are just writing in the packet that our results are 80% accurate. So there is a 20% chance that whatever you believe, that is wrong. So we are trying to keep it to above 95%. So from AIMS Bhopal, they said that you should take it to 98% or 95%. So for that, we are doing repeated clinical trials. So we are making the materials, making the sensors, going to the AIMS Bhopal, and then there we are trying to take the reading, and we are trying to calibrate it with their readings. And we are seeing how much it is matching, what is lacking, and we are coming with the feedback. And so AIMS Bhopal, Jagat sir, he is the doctor who is a partner of ours, collaborator. So he said that you should at least test 500 to 800 samples with reliable result. Then only I can give you the green sheet. So this kind of practice we don't see in the industry. So we are not even ready to believe them to that extent. And also regarding the affordability, so you said that why not go to the global market? So we are trying to focus on the locality. So we chose soybean for that matter. So we want to first paint our vicinity with greenery, and then we will think about the international. Also, we are starting small here as we are discussing the business model right now. So we are learning, and maybe in the future we have. And one more thing, I have omitted a lot of, first when we discussed, we had a lot of things in the business model. But we have omitted a lot of things after discussing with the BCs, going to multiple outreach event. They said that, yeah, you are trying to go to the telemarket, but that is not possible for you right now.
that is a huge different dimension and you cannot handle that right now. So you should just pick it out of the plan and maybe in 10 years or 20 years, you may think of it. So those kind of things, so we have removed a lot of things from our initial ideas. And we have added a few more which we think, yes, we can do it in short terms. So these kind of challenges and solutions, it comes with the development cycle of a startup. So that is why I am sharing these slides with you. And we are presenting these in the VC and other pitch as well. So, so thank you, sir, for this advice. And any more suggestion here? So partners, let's say. Yeah, so feel free to ask questions or give any suggestions. So why these things is not there? I believe these things should be there. So if you have any ideas. Okay, sir. Yes, sir. आपने जैसे स्टार्ट किया था कि अगर मैं दो पैर रखता हूं तो दोनों पैरों के बीच की जो ज़मीन है वो दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाएगी. तो व्हाट इज योर हाउ डिड यू ओवरकम दिस थिंग्स विद सिंगल योर सेंसर? नंबर वन. नंबर टू is there any ratio that in 1 hectare for real time based data, if I want a real time based data, in 1 hectare how much sensor I should apply on my area? This study was never ever done. Like by measuring a soil sample in a local mode, we used to apply fertilizer. We can say this will be the first of its kind to sense it probably 1,000 times in a 1 hectare land, or maybe 2,000 times in a 20 hectare land. There are no specifications that should be telling you that in 1 hectare you should be having 10 different steps. So this will be first of its kind. So while doing this, you will be having, we can say, billions of data. Now you aggregate, you study, you put bar diagram, you do pie chart, you do statistical analysis. Then you come together about an analysis that if this is the average parameter of your soil sample, then probably this is the solution. So we have just started. We are just warming up, but it takes lots and lots of time and effort because this study has never been done ever in any world, in any country. Calibration. Yes. Calibration is missing. Because for calibration, the gold standard he has mentioned, 10,000 soil sample. Before that, you cannot even claim anything. For biological sample, AIMS Bhopal said 500 samples. जो सर ने बताया कैलिब्रेशन के लिए हम लोग पहले क्या किए कि वो जो सेंसर परचेज करके लेकर आए, हमने उसका रीड आउट डिज़ाइन किया, क्योंकि वो रीड आउट के साथ में आ रहा था लगभग 2 लाख के आसपास का. नॉर्मल सेंसर लगभग 28,000 का था, तो हमने उसको चाइना से मंगवाया था हमारे एक फ्रेंड से. तो आया, हमने उसका रीड आउट बनाया, रीड आउट बनाने के बाद हमने उसकी टेस्टिंग की. लेकिन जब टेस्ट किए तो आपको बताया मैंने 3 बीकर में तीनों के रिजल्ट अलग अलग. अब हमको ये चेक करना था कि ये सच में सही एक भी बार दिया कि नहीं दिया. फिर हम लोगों ने उस टाइम पे हमारा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के संजय दुबे सर हैं, उनसे हम लोगों का कोलैबोरेशन था, हम लोगों की बातचीत होती थी क्योंकि इनिशियल स्टेज में हम थे, तो उनसे सजेशन लेते थे. तो उन्होंने बोला कि जो है आप एक काम कीजिए, वो सॉइल सैंपल तीनों ला के हमको दीजिए, हम तीनों का देख के बताते हैं. तो इन्होंने जब टेस्ट किया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में, तीनों का रिजल्ट सेम था. मतलब उन्होंने 3 अलग अलग टेस्ट किए तीनों बीकर का, क्योंकि सेम मिट्टी थी तो उसका रिजल्ट भी सेम आया. लेकिन वो जो सेम सही वाला जो रिजल्ट आया लैब से, वो बाकी तीनों रिजल्ट से मैच नहीं किया जो इन्होंने टेस्ट किया था. अब बात यह है कि हम लोगों ने ये तो पता कर लिया कि जो अभी अवेलेबल मार्केट में सेंसर्स हैं वो काम के नहीं है, रिलायबल नहीं है. अब हम लोगों ने जब अपने सेंसर की तरफ गए तो अब ये भी चेक करना था कि हमारा जो सेंसर है वो सच में सही है या हमारा भी उसी चाइनीज सेंसर की तरह ही है कि 3 बार टेस्ट किए 3 बार डिफरेंट रिजल्ट्स. तो हम लोगों ने इस पर काफ़ी एग्जॉस्टिव वे में इस पर किया है. लगभग हर हफ्ते अभी हम लोगों के, ये जो आप लोगों को कुछ फ़ोटोज़ दिखाई गई सॉइल कलेक्शन की, ये एवरी वीक होता है. और कम से कम 30 सैंपल जो है हम लोग कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में रेगुलर बेसिस पर देकर आते हैं. इनफैक्ट अभी भी 30 सैंपल्स पड़े हुए हैं वहाँ पर
जिनके रिजल्ट हम लोगों को जाके लेकर आना है। इस हफ्ते हम लोग सॉइल कलेक्शन नहीं किए हैं, नहीं तो हम लोग हर हफ्ते मिनिमम 30 सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, उसको वहाँ पे देकर आते हैं, उसकी टेस्टिंग अपनी लैब में करते हैं, सेम सॉइल की लैब में किए और वहाँ से रिजल्ट मंगाए, और दोनों के रिजल्ट को हम लोग बैठ के कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद भी हम लोगों को ये था कि हमने सोच के बनाया था कि हमारा 100% एक्यूरेट रिजल्ट देगा, बट जब हमने उसको एक्चुअल में टेस्ट किया, वो किसी में 85 दे रहा था, किसी में 105, मतलब थोड़ा कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे जा रहा था, 95 90 तक, 85 तक ऐसे रिजल्ट्स आ रहे थे। तो इसमें यह भी था कि हम ये नहीं दे सकते। सर का क्लियर कहना था, चाहे बायो वाले में हो, चाहे वाटर वाले में हो, चाहे गैस वाले में, चाहे एग्रीकल्चर में हो, हम गलत सेंसर तब तक मार्केट में, हमारा 3 साल हो गया कंपनी को स्टेब्लिश हुए। कि मुझे दो, मैं मार्केट करूँगी, आई विल गो टू द डॉक्टर्स, आई विल गो टू अदर पीपल, मैं मुझे तो अब करना ही है ना, दो। दे वर जस्ट नॉट रेडी टू गिव मी द मशीन्स, बोलते हैं अभी भी रिसर्च चल रहा है, अभी भी उसमें R&D चल रही है। तो मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ आज भी कि वो जो R&D है वो एक्यूरेट जब तक पहुँचता है, फैंटास्टिक, वील गिव यू टाइम, आफ्टर दैट द इनोवेशन विल कीप कंटिन्यूइंग एंड अपडेटिंग, लेकिन हमको मार्केट तक पहुँचने देना प्लीज़, है ना? यस। यस यस यस। यस मैम। मैं हाँ मैम, पता है आप जो बोल रही हैं बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हो, यही हम लोगों का भी सोच है। हम लोग जैसे अभी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, उसका कैलिब्रेशन चल रहा है, लेकिन हम जिनके खेत से मिट्टी लेकर आ रहे हैं ना, उनको ही ये मशीन बेचेंगे, वो नहीं खरीदेंगे। कब तक? जब तक हम उनको रिलायबली टेस्ट करके दिखा नहीं देंगे। हमने सोयाबीन के फील्ड के लिए कैलिब्रेशन किया, सोयाबीन के लगभग हम लोगों ने 1200 या 1300 के आसपास हम लोगों ने सैंपल टेस्ट करवाए। हाँ नहीं मैम, वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मैम। हम लोगों ने एक ट्रायल के तौर पर, ये हमारे प्लान में भी है, बिजनेस का कस्टमर सेगमेंट में देख सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज है। यस मैम। एक और चीज़ है, हम लोगों ने ये डिसाइड किया है, जैसे हमने अपने प्रोडक्ट्स जो शोकेस किए हैं, एंड वी हैव गॉट गवर्नमेंट फंड, जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी को शोकेस किया, एंड वी गॉट फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, जिससे ये रिसर्च चल रहा है। बट एट द सेम टाइम व्हाट वी हैव थॉट इज़, हम सिमरोल में, जैसे लोकल से हम ग्लोबल जाएंगे, पहले लोकल में सिमरोल में एक खेत को हम मॉडल बना रहे हैं, एंड वी आर मेंटरिंग द खेत फॉर 1 ईयर। वी आर मेंटरिंग द खेत फॉर 1 ईयर। हम जो बोल रहे हैं वो फार्मर वो कर रहा है कि आप ये डालो, ये नहीं डालो, ये करो, ऐसा करो, एंड वी आर क्रिएटिंग अ केस फॉर द अदर फार्मर्स टू बिलीव नेक्स्ट ईयर। जब उनके ही पीयर ग्रुप से निकल के अगले साल कोई फार्मर उन्हीं से उठ के हमारे साथ यहाँ खड़ा होगा, तो वी विल क्रिएट अ लेवल ऑफ ट्रस्ट दैट इज़ अनब्रेकेबल। दे विल बी रेडी। हाँ, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर है, हम सब यहाँ मैनेजमेंट वाले हैं, वी नो एग्रीकल्चर हैज़ अ जेस्टेशन पीरियड, अ कॉबवेब इज क्रिएटेड, वो समय लगेगा। सो वी आर क्रिएटिंग मॉडल खेत, जैसे इंदौर है, इंदौर की स्वच्छता है, राइट। 7 years हम लोग फर्स्ट आए, अब हम मेंटर करेंगे, करेक्ट, वी आर आउट ऑफ द लीग नाउ, वी आर इन अ प्रीमियम लीग। तो वो मॉडल है, हमारा मॉडल दूसरे सिटीज़ यूज़ करेंगे, बिकॉज दैट इज़ ऑलरेडी ट्राइड एंड एस्टैब्लिश्ड एंड सक्सेसफुल। सो वी आर क्रिएटिंग दैट सक्सेसफुल खेत, जो हमारे कहने पे, जिनकी कॉस्ट कम हो रही है, और नेचुरली कॉस्ट कम होने पे प्रॉफिट ज़्यादा, और वी आर अप्लाइंग दिस इकोनॉमिक मॉडल, एंड देन वी आर गोइंग टू यूज़ दैट मॉडल खेत टू प्रमोट फॉर द अदर फार्मर्स टू यूज़ फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। हाँ, हिमांशु, so sorry, I'll take the question. My question was that what exactly have you envisioned about your minimum viable product, जो MVP बोलते हैं,
तो वो आपका MVP क्या है? एंड इफ दैट MVP इज रेडी, व्हेन मिनिमम सर सेकंड जैसा आपने कहा था, मैंने बोला कि पैसे की जरूरत नहीं। मेरा ऐसा सजेशन है कि पैसे की आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे ही आप मार्केट में आएंगे आपके 10 कंपटीटर खड़े हो जाएंगे। हाँ सर, एग्री। To update your product continuously, और उसमें नए नए चीजें डालने के लिए you need money, तब आपको कोई फंडिंग नहीं करेगा। यस सर। पैसा तो नहीं भैया सबसे ऊपर रखो, सर उसके बाद सब कुछ सोचो। ऐसा नहीं large amount of demand, and how you will manage if you are not having that? सर पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। आपका क्वेश्चन क्या था? मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होगा हमारा? वो क्या होगा, वो टाइम फ्रेम होना चाहिए। टाइम फ्रेम मेरे को 1 साल के अंदर अपना मिनिमम वायबल प्रोडक्ट मार्केट में डालना है, उसके बाद रिकॉल होता है तो मैं रिकॉल भी करूँगा। यस सर। सर हमारा जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी रेडी है। जो आपको मतलब दिखाए जा रहे फोटोज़ में वो MVP ही है, और बस उसका ये है कि अभी कैलिब्रेशन फेज में है वो। जैसे ही बेंचमार्क हो जाएगा फिर वो मार्केट रेडी हो जाएगा। तो बस हम वेट कर रहे हैं कि बेंचमार्क, क्योंकि जैसे सर ने बोला कि 1000 सैंपल, तो ये टाइम लगता है। और इसके लिए जो मैं आपको आगे अनिमेश भी है और मैं बताएंगे, तो काफ़ी सीड फंड स्कीम है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, तो उन्होंने हमें फंड किया हुआ है। क्योंकि हमें भी इतना कॉन्फिडेंस तभी आया जब हमने देखा कि इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज करके हमारे आइडियाज़ पे इन्वेस्ट करने को रेडी हो रहा है। गवर्नमेंट एजेंसीज भी रेडी हो रहे हैं कि आप ये पैसा लो और आप इसमें एक प्रोडक्ट मिनिमम वायबल स्टेज तक पहुंचाओ, जो कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम करता है। तो वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी बस कैलिब्रेशन टेस्टिंग के लिए अभी कुछ है जो कि सर मैम ने, और मतलब जो बूटस्ट्रैप होता है, तो बूटस्ट्रैप मनी से अभी हम है कि बस कैलिब्रेशन कर रहे हैं और उसके बाद पुश करेंगे। और अभी क्योंकि हमारा कैलिब्रेशन फेज कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा USP ही है कि हमारा कैलिब्रेटेड और रिलायबल प्रोडक्ट है, लेकिन उसके लिए हमें कैलिब्रेशन का डेटा तो देना पड़ेगा। तो जब हम प्रीवियसली भी VCs के पास गए थे तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम बोल रहे हो रिलायबल है, कैलिब्रेटेड है, लेकिन किया नहीं है तुमने अभी तक। तो हम अभी बस हेड डाउन करके कैलिब्रेशन कंप्लीट कर रहे हैं प्रोसेस। जैसे ही कंप्लीट होगा फिर हम VCs को अप्रोच करेंगे कि हम आगे बढ़ पाएंगे। और सर दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि हम सर एग्जैक्ट फ्री में नहीं कर रहे, जैसे बिल ऑफ मटेरियल्स हमने दिखाया उस पर प्लस समथिंग रहेगा विच विल ऑल्सो भी मतलब एग्जिस्टिंग ऑप्शन से काफ़ी चीप रहेगा। और थोड़ा ईज ऑफ एक्सेस, अफोर्डेबल, मतलब जो एसेसिबिलिटी ऑप्शन है कि जैसे विकास ने बताया था कि हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में रखेंगे, टारगेटेड टुवर्ड्स इंडियन मार्केट, तो वो ऑप्शंस रखेंगे और इतना रखेंगे कि हमारा बिजनेस चल सके, थोड़ा सा प्रॉफिट हो, ताकि हम जो कंटिजेंसीज हैं उसको कवर कर सकें। तो ये अभी पहला आइडिया है सर। बाद में फिर मे भी और चीज़ें हैं कि हमें एक्सपांड करना है या फिर कुछ करना है, तो उसके हिसाब से मे भी चेंज हो सकता है। कल या परसों जो एक लास्ट सेशन हुआ था, जो गेस्ट आए थे उन्होंने एक मूवी का जिक्र किया था, फाउंडर, अतुल सर ने। तो यू नो अबाउट मैकडोनल्ड, यू नो अबाउट रेक रिक ने मैकडोनल्ड नहीं बनाया था, है ना। तो उस पिक्चर को ज़रूर देखिए और फिर अपने को पोजीशन करिए कि आप कहाँ पे हैं। नहीं, ये सही बोल रहे हैं सर, पैसे के बिना तो। और हम लोग मतलब ऐसे एक बार हम लोगों के माइंड में आता है, जैसे हमारे 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी एक्सेप्टेड हैं लेकिन उनका भी सैंक्शन लेटर नहीं आया है। अब हमारी जो लैब है वो एक्सपेरिमेंटल लैब है, उसमें हर हफ्ते कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये के गैस सिलेंडर्स लगते हैं, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, आर्गन के, CVD चलती है उसमें लगता है, DIBS चलती है उसमें लगते हैं। तो हाँ, तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि सर ने बस हम लोग एक बार बोल रहे थे सर से कि सर हम लोगों को ना कुछ प्रोडक्ट अपने मार्केट में लाने चाहिए ताकि कुछ पैसे आएँ और हम लोग R&D और आगे से बढ़ा सकें। तो सर ने स्ट्रिक्टली बोला था कि जब तक अप टू द एकदम बेंच मार्क पर तुम लोग एकदम खड़े नहीं आ जाओगे, हम कहीं पे भी कोई अपना प्रोडक्ट जो है मोनेटाइज नहीं करने वाले। और हम लोगों एक दूसरा फ़ायदा भी है, हो सकता है भले पैसे से फ़ायदा ना दिख रहा हो, हमारा कोई प्रोडक्ट अभी हम लोग मार्केट में नहीं लाए, पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन एक जो दूसरा प्रॉफिट है, हम लोग रिसर्चर्स हैं और हमारे पास हमारी जो सबसे बड़ी इनकम है वो हमारे रिसर्च पेपर्स, पेटेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं। और अभी 3 साल हुए हैं हम लोगों को PhD करते हुए, 3.5 साल हो गए। IIT इंदौर में
अभी तक का रिकॉर्ड है ड्यूरिंग पीएचडी या पीएचडी के बाद भी 7 पेटेंट, मतलब एक आप 5 साल में या 7 साल में नहीं ला सकते। अभी एट प्रेजेंट ड्यू टू दिस स्टार्टअप, और यही हमारी कमाई है कि अभी मेरे पास में रिकॉर्ड आईआईटी इंदौर में 7 पेटेंट हैं, जिसमें से 5 ऑलरेडी ग्रांटेड हैं। तो ये भी एक हमारी मनी है। ओके, यस सर। यस सर। सर यस, जैसे सौरभ सर ये आंसर को टैकल करेंगे, बट मैं बस ये बता देते हैं, हम जैसे मैंने दिखाया आपको ग्राम पंचायत सिमरोल वाला, तो हमने 2 बेसिकली ऐसे असेंबलीज किए हैं फार्मर्स को और फिर उनके फीडबैक लेने के लिए, और फर्स्ट टाइम फीडबैक बहुत अच्छा नहीं था, फिर हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने के बाद अभी सेकंड टाइम किया है तो इट हैज़ इम्प्रूव टू अराउंड की, मतलब जैसे 1 से 10 तक रेटिंग देने को बोलते हैं तो 8 के आसपास पहुंचा है। फर्स्ट टाइम तो मतलब वो 40 से 50 के बीच में था, और वो लोग बोले कि मतलब उस वक्त हमारे पास ऐप भी नहीं था, वो डब्बा था उसमें रीड आउट था, तो बोले कि इसमें कुछ दिखता नहीं है, हमें समझ नहीं आता और हम इसका क्या करेंगे। तो उसके बाद हमने ऐप पे ज़्यादा प्रेशराइज फोकस किया कि हम ऐप में सीधा आ जाता है कि यस ठीक है आपका एनपीके ये है, आपको ये फर्टिलाइजर्स यूज़ करने हैं, वो करने, तो हमने वो इम्प्रूव किया। वरना हमें लगा था कि जो इन्फॉर्मेशन डेटा सॉइल साइंटिस्ट देते हैं वही हम दे देंगे, फार्मर्स खुश हो जाएंगे, बट वैसा नहीं था। तो ये इम्प्रूवमेंट, और बाकी सौरभ सर आपको कुछ बाकी इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जैसे ये प्रोडक्ट से ये सिर्फ हम तीनों ने नए, जैसे उससे पहले भी दिखाया था, जो इसकी स्टार्टिंग करी थी वो थे चंद्रभान सर, मयंक सर और सुमित सर। उन्होंने हमारे लिए एक बेस तैयार किया कि अभी जैसे हम फार्मर पे जाते हैं, जैसे मैं किसी न्यू फार्मर पे जाता हूँ और सिमरौल एक जैसे महू साइड जाता हूँ, वहाँ पे हमें पहले एक बार पूरा इंटरेक्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर सिमरौल साइड जाओ वो खुद बुलाए कि भाई आ जाओ भैया आ जाओ, पहले चाय पी लो, पहले ये पी लो। और जैसा कि मैम ने क्वेश्चन भी पूछा था गवर्नमेंट वाला, गवर्नमेंट का तो मैं जब भी आता हूँ सर को बताता हूँ, एक फार्मर मिलते हैं वो गवर्नमेंट को जो 1 घंटा गालियाँ दे रहा होता है कि भाई सरकार क्या करी है, ये सरकार हमारा पूरा खेत बर्बाद हो गया, कोई सब्सिडी तक नहीं मिलती उनको। तो गवर्नमेंट पे हम अवॉइड भी करेंगे, गवर्नमेंट पे इतना ना जाए कि पूरा, क्योंकि जब हम लोग खेत में जाते हैं तो लगता है गवर्नमेंट की तरफ से आए हम लोग उनके खेत का सर्वे करने, तो ना थोड़ा निगेटिव भी सुनने को मिलता है। लेकिन जब हम लोग उनको बताते हैं कि हम लोग एक्चुअली में हैं कौन, हम लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह की आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं। जैसे अभी फर्स्ट हाफ में कोई बोल रहे थे ना, वो जो सर आए थे कि अगर हम एजुकेटर्स हैं तो हमको 60% कॉमेडियन होना चाहिए और 40% टीचिंग देनी चाहिए। मेरा मानना बिल्कुल अलग है। अगर आपके पास नॉलेज है, आप एकेडमिशियन हो, तो आपको बस उनको इम्पोर्टेंस समझानी है उसकी, बस आपको कॉमेडियन बनने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जिसको लेना है ज्ञान वो लेगा, और जिसको नहीं लेना है आप चाहे 100% कॉमेडियन बन जाओ, वो ज्ञान आपसे नहीं लेने वाला है। हम लोग अभी तक 3 गांव में गए हैं। एक है घोसी खेड़ा, वो हम यहाँ सिमरोल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में 700 लोग थे, बाकी और वो फिर जगह भी अलग अलग थी, जैसे अयोध्या। मैं इसमें जैसे कि ये था कि जैसे हम अपनी छुट्टियों पे भी जाते थे, हम अपने गांव जा रहे हैं, अपने गांव में भी अब सबको आईआईटी नहीं पता होता, वहाँ पे आईटीआई में काम करते हो तो उनको जाके वहाँ पे हम टेस्ट करके भी दिखाते थे कि भाई ऐसा ऐसा है। तो इस तरह से जैसे यूपी में मैक्सिमम, अभी एमपी के अलावा यूपी में इस प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज है, जैसे कौन कौन से गंज है। हाँ कहाँ किया था? नहीं, मैं तो अपने अयोध्या में किया था, और एक जगह था तारुण, वहाँ पे जाके मैंने लगभग टोटल 150 सैंपल्स कलेक्ट किए थे। टोटल 30 से 40 फील्ड में मैं गया था, क्योंकि 1 हफ्ते की छुट्टी पर गया था, तो 2-3 जगह पे जाके मैं वही टेस्ट किया था। फिर अभी तक तो नहीं। और वैसे भी ना, ये जो प्रोडक्ट है, ये सर का जो प्लान है हम लोगों का कि हम लोग पहले इसको अच्छे से बनाएंगे, और बनाने के बाद हम लोग एक पायलट स्टडी के तौर पे, सर का प्लान है कि 200 ग्राम पंचायत में जो सरपंच होते हैं हम लोग उनको देने वाले हैं फॉर 6 मंथ। वो लोग उसको यूज़ करेंगे, गांव के जितने भी किसान हैं उनके खेतों में ले जाके टेस्ट करेंगे, उससे इनपुट्स देंगे, वो लोग उनको अप्लाई करेंगे, कुछ उनके फीडबैक्स होंगे वो हम लोगों को देंगे।
और फिर उसके 6 महीने बाद जो भी उनके इनपुट्स वगैरह आए रहेंगे उनको इनकॉर्पोरेट करके तब हम लोग इसको मार्केट में लॉन्च करेंगे। सर आई थिंक आपका आंसर मिल गया ना। ओके सर, एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा जो कि बेसिकली ये स्लाइड में है। तो जो प्रॉफिट वाला बात था, तो सर अभी भी हम जैसे मैंने आपको बोला कि सर और मैम ने बूटस्ट्रैप करके अभी सस्टेन ऑपरेशन रख रहे हैं हम अपना। तो स्टार्टअप्स का यही होता है कि अप्स होता है, कभी फंड बहुत ज़्यादा होता है, हमें खर्च करना होता है विद इन अ टाइम पीरियड। कभी ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे नहीं होते, बट वो हमें अपने से सस्टेन करना होता है। जैसे पहले दिन बताया था कि विद इन ए कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ रिस्क, तो वो हम कर रहे हैं। बट हमारा ऐसा है कि सर जैसे जो वैल्यूज़ होते हैं वो स्टार्टिंग से ही दिखने चाहिए। तो बिफोर द स्टार्टअप, और ये हमने बेसिकली साइंटिफिक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक इवेंट है जो हम कर रहे हैं सिमरौल में। जैसे सर ने भी फर्स्ट दिन बताया था कि एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास होते हैं, मतलब इंदौर में बहुत जगह पे हैं। तो पहले क्योंकि हम सिमरौल से हैं तो हमने सिमरौल में जाके वहाँ पे ट्राइबल और अनाथ बच्चियाँ जो हैं उनको हम कुछ एड प्रोवाइड किए, उनके साथ गए, मिले। और नॉट जस्ट स्टार्टअप, हम आईआईटी और रिसर्च और उनको थोड़ा सा साइंस के डायरेक्शन में पुश किए और मोटिवेट किए उनको एजुकेशनल किट्स वगैरह दे के और चीज़ें हो के। तो ये उनके कुछ फ़ोटोज़ हैं। तो ये जस्ट मैं शेयर करना चाहूँगा कि सर प्रॉफिट, और मैं वो मूवी ज़रूर देखूँगा सर, द एंटरप्रेन्योर। बट टिल देन माय आइडिया ऑफ सक्सेस इज़ कि हम कितना सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं वैल्यू के हिसाब से, और बाकी लोगों की भलाई और खुशी के लिए भी। और पैसा सर, आई थिंक द मनी विल फॉलो। सो सर ये फर्स्ट ईयर का था, ये सेकेंड ईयर में है जो दोंदरगांव में किया था हमने, और यहाँ भी 103 थे पार्टिसिपेंट। और इस बार ये अभी जस्ट लास्ट संडे हमने इवेंट कराया था, तो ये चोरल में कराया था। तो सर वो हमने फिर उस इवेंट का नाम भी उड़ान रख दिया, क्योंकि वहाँ वी वांट द किड्स जो हमें लगता है कि दे आर केज्ड एंड दे आर होपलेस, बट उन्होंने जैसे ये ड्राइंग कंपटीशन देख सकते हैं सर, उन्होंने आई थिंक नहीं है ये, या सो जस्ट ये बच्ची है, इसके मम्मी पापा नहीं है। सी हैज़ पेंटेड कि हाँ मेरी एक सहेली भी है। एंड हमने पूछा कि कौन हो, तो वो बोलते कि नहीं यहाँ पे नहीं है, बट मेरे साथ है, मेरे से बात करती है। वाली मैं हूँ, येलो वाली वो दूसरी है, तो हमने उसको फर्स्ट प्राइज दिया। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट दैट आर्ट और द आर्टिस्ट वी आर सर्चिंग, इट्स अबाउट बेसिकली द होप दे हैव व्हेन दे डोंट हैव रिसोर्सेस। सो दैट इज व्हाट वी डू। वी आर ट्राइंग टू गिव बैक टू द सोसाइटी एज वेल एज वी आर ट्राइंग टू गिव टू द सोसाइटी। एंड बस अनिमेश, तुम्हारा स्टेज जल्दी करो। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू So that was from my side.
want to be in future? Many answers are doctors, lawyers. This time, now go back, go to Uran. Next. Yes. Many of them want to be lawyers, doctors. They have super, we should say aspirations. So we need people. In my lecture one, we told you, like we need people who dare to dream. If you dream, then only you can get success. So probably from them, like each one of us can learn many things. The heart is painted by this girl. So many beautiful pictures. So aspirations are great. So that's why we reach the society and we get to know at every aspect that they know more than us. Probably they have more aspirations than many of us. So that is what actually we are looking for. Very good afternoon to all. Myself Animesh Paul, and I am currently a PhD student under the supervision of Professor Saibal Mukherjee at IIT Indore. So mainly I am talking about the fuel of a startup, right? The funding, because infrastructure, technology, marketing, and everything requires a lot of cost, right? And for this we require a lot of funding. So there is many funding available in India, fewer governmental funding things and fewer private funding things. And for international, if we think international, there is an institute called IEEE, that is Institute of Electronics and Electrical Engineers. They also provide few funds. So I briefly just explain about the startup schemes present here. So firstly, the governmental financial support. So Startup India, so it is launched basically in the year 2016, basically 2016 is basically the goal is to, objective is to grow a startup ecosystem in India. So what's the eligibility of it? The startup should be incorporated within 10 years and it must be a private limited company and the annual turnover should be 100 crore. So why it is important? Because it provides many things. Because for a startup, when you develop any kind of product, like we want to file a patent because no one can copy such thing. And for a patent, from filing to granting it requires lots of money, right? So Startup India provides this kind of IPR support. Another form for prototype developing and for other things, it will also provide funding. For this we write proposals and the government agencies will judge it, and according to it the money will be sanctioned. And Startup Seed Fund Scheme, it is a scheme under Startup India. It is launched in the year 2021. So it is different from Startup India in the sense that it helps the early startups to grow. Like the startups that incorporated within 2 years, it helps to grow such startups. And it also provides funds up to 20 lakhs for business purpose, and for industry development it also provides funds up to 50 lakhs. And 50 lakhs, that is Startup Seed Fund Scheme. And now the Startup India Fund of Funds, it is also a scheme under Startup India. It is launched in the year 2016. So it is different in the sense that it does not provide funds to the startups directly. There is a middleman. There is a government affiliated private agencies or NGO type of fund. So they provide funds to this kind of NGOs as a middleman. And this NGOs or the government agent or the other private agency, they select according to the performance and the idea of any startups, and they provide fund to the startups, growing startups. So it is different from seed fund scheme in the sense. And other one is the ATAL Innovation Mission. It is launched by Niti Aayog, that is one kind of think tank of government of India. So what they actually did, they established different kind of incubation center and they name it ATAL Incubation Center. And under incubation center, there are many startup agencies and innovations, right? The incubation center has
many kind of infrastructure, so the small startups can use that infrastructure of the incubation centers, and they can grow in such a way. And the other is the Prime Minister Employment Generation Program. So it's basically a credit subsidy loan kind of thing. It does not provide direct grant. It provides kind of loan in the sense that to grow any kind of idea, we need funds. So it will provide fund up to 40 lakhs to grow a business idea. That is Prime Minister Employment Generation Program. And now come to the different private startup schemes. So first one is the Technology Hub of Innovation Foundation, that is IIT Bombay, that is given by IIT Bombay, and the scheme name is Arohan Seed Fund Scheme. So it basically the startups that are working in the field of IoT, AI, ML, healthcare, so they can pitch for this grant, and if they selected, the TIH Foundation can provide funds up to 1 crore to grow the startup and these funds can be used from different sense like prototype developing, market validation, and technology scale up and business development. And the other kind of private startup schemes like India accelerators are there and Google for startups are there. So these are also kind of similar thing that they provide funds to grow early startups. And now come to IEEE startup opportunities. So IEEE is basically world's biggest technical professional institutes. IEEE means the Institute of Electronics and Electrical Engineers. So how IEEE works? So under IEEE, there is basically different chapters, different societies and council. Like for example, somebody is working on electron devices, right? So there is a chapter called IEEE Electron Device Society. So you want to perform any workshop under based on electron devices. So you write a proposal to the Electron Device Society. If it is granted, then they provide funds to organize you workshop and to grow. And other thing is IEEE organizes different conferences, like different chapters, conferences across the year. For Electron Device Society, there is EDTM, Electron Device Technology Conference. So it is one kind of great networking and collaboration opportunities. Like in these conferences, there is basically the top scientists across the world came. So you can go there, you can discuss your technology, you can discuss your idea, innovation with them, and you can take the idea from them and you can grow in that way. And other thing, not only chapters, there are also different programs of IEEE, like IEEE Entrepreneurship Program, IEEE Maker Events and Technical Knowledge and Skill Development Society also. And other thing, as I mentioned, that IEEE is basically not only the name suggests, it basically electronics and electrical organization. It does not limit into it. Basically, what happens, there are many IEEE humanitarian projects, like I will discuss later, and like IEEE Women in Engineering. Like we know that few years from back, like 20 years below the line, there are only few women basically in the engineering. But now IEEE takes an initiative to make the numbers high. So in that IEEE Women in Engineering thing, we can the women can participate to pitch, and if they selected, they can acquire funding to grow their ideas. So that is also a case. So the IEEE Tech for Good, as I mentioned, that it is a humanitarian project of IEEE. So actually it happens basically the technology to transform humanitarian things to environmental things. So they basically things that you submit a proposal based on your goal, and according to it, the IEEE Tech for Good provides you funds to do some kind of humanitarian projects. Apart from that, there is basically different funding schemes like local chapter meeting, local meeting. They will provide up to $750 for local events, and for
For a execom meeting and local event, they provide 1500 USD for networking and innovation. And these are few are the recognition, exhibition and highlights of our startup, that is Quantum L2M Innovation Private Limited. So first one is that this is Tata Steel competition, startup competition. You get a runner-up prize. And the second one is that we got the DPIIT recognition certificate from the Government of India. And these are the patents, granted patents. We have 7 granted patents in the Quantec L2M Innovation Private Limited. And this is the best technology award we received at IIT Indore. And this is the photo with the director of the IIT Indore. And as I mentioned that there is the pitching competition in Women in Engineering. We got the best innovation pitch award from the IEEE Women in Engineering competition from 2023. And the first one is picture at IIT Hyderabad with the Education Minister of India. We showing up our startup technology to him. And this is second one is the IEEE Women in Engineering competition. We got the best spotlight pitch award. And third one is we got a award at Research and Innovation Conclave at IIT Indore. And these are few of the news and media highlights that we got at our startup. And finally, about the research grants we received till date. So first one we received that I mentioned that from TI Technology Innovation Hub IoT IIT Bombay we get 10 lakh rupees. This is the Udyam registration certificate, and for best technology award that I mentioned we got 2.25 lakh from them, and from Tata Steel runner-up prize we got 5 lakh rupees from them. So thank you. Thank you, Animesh. Let's wrap up. Do we have questions? Anybody? Which one you are saying? Agricultural or bio? You should have for both cases, you should have as many as possible. So we are following 10,000. Nobody told us 10,000. 1600 per soil sample testing. Now you can calculate. But who has given us 10,000? Nobody. We are just referring to it. Because our pitching is that we want to sell reliability. We do not want to sell people something which is uncooked as far as our brain goes. So our brain goes first we are sticking to reliability. Even if I think myself as a customer, if I need to buy something, first I have to trust the product. So that is the gold standard we are following. For biosensor 500, that is the gold standard. AIMS, Bhopal has suggested us. All your products operate at the condition of 15 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. So is that a limitation of the sensor, or you have some other limitations because of which you are writing? So 15 degrees to 40 degrees, what is the room temperature in terms of degree centigrade? What is the room temperature? What is the temperature of this room now? 30 degrees. So always we range in that case. Now we go for agriculture. You think about clear sky, sunny noon. Now you will be thinking about 40s, 50s, 60s. You don't know. So if your sensor can sustain such high temperature, it is very good. If you can go as low as 7 degrees or 6 degrees that happen nowadays in the night time in agriculture, that is very good. So we are just trying to pitch in to enhance the temperature range of our product as much as possible. And so the fertilizers that the app suggests, they are about organic farming or chemical fertilizers? They are all chemical fertilizers. All chemical. They purchase Okay, from village, some specific locations. And if you go to any such village locations also, they'll be providing with you a chart
that when you are going to sow, for example, potato, this time during the seeding process, you have to use insecticide, after that herbicide, after that fertilizer, after that pesticide. So these many bodies. So that is solution number 1. Solution number 2, again some other aspects. Solution number 3, so farmers that look, okay, ye de do, row number 1 de do. So those are wrong. That is what eventually this time we have picked up. You know, Shivendu, who is a postdoc funded by IIT, TIH, IIT Bombay. So he is working on this specific product, Vasudha and Dharti, and so he did his PhD in the Department of Chemistry of IIT Indore, and now he came up with the chart that is pasted outside the shop from which the farmers just wo ina mina dika aise karke, like whatever rows they pick up and they are given the solutions. But these are wrong, which will be telling them. But telling millions wrong, you can imagine what will happen to you. So, brotherhood, bhaichara. Okay. Do we have any other question? Okay. Thank you so much, Shebil sir, and the entire team from IIT Indore, Quartic, L2M. And from IPS Academy. Yes. She is the backbone and heart of our startup. And of course, Pallavi Mukherjee ma'am, for such an interesting session. We all have learned a lot from this session. And I would now formally invite you only, ma'am, to propose the official vote of thanks on behalf of IPS Academy Institute of Business Management and Research, Indore. Thank you so much, Ritu. Thank you. So as you know that I have 2 roles and 2 worlds. I am a Gemini, and for me this is not a challenge, it's a bliss. Thank you so much, Professor Shebil Mukherjee and the team for such a wonderful session. See, this FDP has different, I would say, not categories, but sir, please take a seat, sir. Different dimensions. The first dimension of this FDP, that is promoting entrepreneurship within academia, empowering educators, is where we hear those people who are trainers. They speak to students, they create brilliant minds, but they don't create anything else. Not a product which is tangible. They play with the minds, which is very important. We are all educators, we do that only. So this is one segment or dimension of this FDP where we have called trainers like that. The second part is the other set of people who are brilliant people. They have created portals. They have got everybody together, like what we had this morning in IIT Madras professor. He said, we have got everything together in a portal and now we rank the institutes, and he gave us wonderful insights about how we can become number 1. The third dimension is the dimension where we have a tangible product, somebody who is ready to share his research, which is absolutely impossible. I tried a couple of other people and asked them to explain their research work from scratch. Nobody was ready. Because I belong to this team, I vouched in, I said, let's get you in, because in 13 years of my career here, sir has never visited to IPS, and we had never had such sessions. But this time I really requested because of the topic. It is promoting entrepreneurship and advancing the startup ecosystem within academia, empowering educators. So the third segment of this FDP was to show a group of people who have created something right from seed, probably in the last 15 years. This is the result of 15 years, not 3 years. 3 years was because I requested them, whatever you're creating, let the other people also enjoy it for the society. Because as management people and the economists, all of us know about SDGs, right?
Sustainable Development Goals, which are 17, out of which 2 or 3 are covered here: environment, healthcare. So we know that how important it is. Today's topic, whatever they discussed, I gave them the topic, was entrepreneurship, research and innovation. So today what they shared was their research and innovation, and then further insights of how this research and innovation can create a difference in the market with the help of everybody. Formally proposing a vote of thanks is absolutely what Ritu ma'am has asked me to do. So, sirs, thank you so much for sparing so much time for IPS. And for our group, thank you so much. A huge round of applause for him and the team. Secondly, I want to open this forum for everyone sitting here today, all my near and dear friends, my colleagues. This portal, this startup is open for new CEOs, new CFOs of our domain, which is marketing, which is economics, which is finance. So let's plan something together. And thank you, everybody, for attending. And thank you, sir, for coming. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. We are just waiting for the backdrop to appear. Huh? Okay, now towards the last part of today's session, may I now request Dr. Sanju Mahawar sir and Dr. Vaibhav Modak sir to present a token of remembrance to our esteemed resource person, Dr. Shebal Mukherjee sir. And of course, the entire team of Quantech L2M Innovations Private Limited from IIT Indore. And how can it happen without the co-founder? Ma'am, please. Please join your team here, ma'am.